The Bollywood star Sushant Singh Rajput has died in Mumbai. He was found hanging in his residence today. There have been several reactions which have come in from the Bollywood fraternity. Rajput's death comes days after his former manager, Disha Salian, committed suicide. Hello, people, and welcome to another stream. And yep, आज मैं अकेला ही हूँ. अब first of all, I would really like to apologize कि start होने में थोड़ा सा technical glitch रहा. सीख जाऊंगा यार. मैंने पहली बार किया है आज. But I hope you guys can hear me well. If you can just confirm that on the chat here, जितने भी लोग देख रहे हैं. And yep, if you can confirm if I'm audible. On and off. So yeah, अगर बीच में stuck होता है तो please don't mind. As we all know that Rajat is traveling. So or Rudraba, your parents are also watching on this on TV. Bhai embarrass mat karwa parents ke samne. Okay, so I know I was stuck because of the fact that internet is a little slow today. But yeah, as we all know, Rajat has been traveling and already missing you, bro. Come back soon. अभी कम से कम वो 10 तारीख से पहले तो नहीं आने वाला है. तब तक आपको यही मनहूस चेहरा देखना पड़ेगा. चला लेना यार. Information मिलेगी आपको पूरी पूरी. Now, what are we going to talk about today? After a 1 day gap, a fresh start to another week, and specifically today being a monologue, the very first time for me. So please bear with me for that. Okay. 13th, 14th, and 15th June, we have gone ahead and discussed it, in depth. But still, there are a lot of things which we have missed. So today's idea for me to be going ahead and clearing all that for you all, so that हमने जो भी छोटी छोटी चीजें मिस करी है उन पे हम एक बार emphasize करें. And because there are a lot of information which has been already out in the public domain again, but a few has already been forgotten by people. So let's proceed further. 13 June. सबसे पहले, you guys know the kind of sequence that has been going on.
8th, 9th, 10th, 11th, 12th. 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th were the days when Meetu Di was present in Mount Blanc with Sushant. Right? Now, something happens, and just because of the fact that Meetu Di's, daughter, I guess, had her examinations, and that was the main reason why she left, why she had to leave. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कोविड के टाइम पे एग्जाम्स एंड ऑल बहुत सारी थ्योरीज बीच में उठी थी. एग्जामिनेशंस वर गोइंग ऑन एंड यूजुअली होता है पेरेंट्स का कि इवन इफ इट्स एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जस्ट टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज completely focused. She had to leave for her personal reasons. बट जब 12 तारीख को मीतू दी जाती है तो क्या किसी की घर में वापस एंट्री होती है? क्योंकि 12 जून के रात की एक फोटो है which I would like to share with you all. If you can just give me a moment. Let me just quickly share the information. So 12th June ko, I'll share the screen. It's certainly through my WhatsApp though, so please don't mind. But I've opened the photograph. You won't be seeing my WhatsApp at all. But yeah. Okay. All right. Got it. Okay. So you can see, I hope you all are able to see what I'm trying to show here. This picture, which was posted on Riya Chakravarti's Instagram account on June 12th. Just let me know if it would be visible for you all. I hope it is, right? And now, if you remember, Riya Chakravarti actually had a, एक second. Okay, so this Chudail actually got herself clicked in Mount Blanc along with this particular cake. 12th की रात को 13th होता है, मतलब 12th की इंटरवीनिंग रात के बाद 13th होती है. एंड 13th को किसका बर्थडे था? वी ऑल नो, राइट? वी डू, करेक्ट? सो सबसे पहली बार बेबी पेंगू का बर्थडे 13 जून. दिशा पत्नी का बर्थडे 13 जून. There were a couple of more figures who shared the same day as their birthdays, but this particular picture of Riya Chakravarti with a cake on June 12th is, like, एक second, क्या comment है? This pic is from May. She reposted the pic on June 12th. Okay, but I underscore K, do you have any entry of this particular post being posted on 12th in the month of May? And I'll tell you why. I'll tell you why. Because if you go to this particular account on Instagram, जो इसने mention किया अपनी photo के नीचे, where it says this is Yam Shruti Modi, and the Instagram account is the Homemade Sunshine. Please go through this Instagram account once, and you would find these two pictures posted exactly on June 12th, one on 12th and the other one on 13th. But in the month of May, there were no entries of this particular picture on this page, which is the Homemade Sunshine. Ria also posted this on 12th June. उससे पहले इसका कोई भी like वो नहीं था. Ria didn't post this particular picture prior to that. ठीक है. और अगर मई में है तो आई रियली हैव नो आइडिया कि मई में किसका बर्थडे था. एंड इफ देयर इज इवन लाइक अ रूमर मिल व्हिच इज गोइंग ऑन दैट कुछ लोग न्यूज को दबाने के लिए ये भी कह रहे होंगे कि कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मई में पोस्टेड हो एंड इट्स अ रीपोस्टेड पिक्चर, बट also could be a possibility that she was there on 12th. So looking at all the probabilities, if you see the Homemade Sunshine account on Instagram, please go ahead and do that, and you would be able to see that this particular picture is entered on June, that is on June 12th, and not in the month of May. Another one, wait, let me see if I can, no, can't go any further. So this is the Homemade Sunshine.
This is the one, and date यहाँ पे नीचे लिखी है 12 जून. I don't know how clear it is. एक बहुत छोटे में लिखी है. If you guys would want to take a screenshot and like scroll in, because I'm unable to, or I'll try to download the picture. So the homemade sunshine. I don't think she would take a risk of coming back. I_K इन्होंने तो बहुत सारे risks लिए हैं यार. चाहे वो 14 जून को हो, चाहे वो 15 जून को हो, they have taken risks, you know, par any imagination. Okay, now if you see here, homemade sunshine, as I was saying, was उनके आप Instagram पे जाओगे, it was not in the month of May, it was posted by them in the month of June. अब बचने के लिए तो obviously a character like Shruti Modi would go ahead and take, like use a lie to simply get off it. So that is one thing, and that's one of the reasons why I said कि we have to look at it from all probabilities. ठीक है, क्योंकि कुछ rumors ने हमें बताया कि this particular post was from May and Shruti Modi accepted it. For some odd reason, I am unable to find anywhere where she accepted it. Now, okay, let me just go ahead and share one more thing with you, which will make a little more sense. So there we go. Just a moment. Taking inputs coming in on the broadcast. Okay. So I'll share the screen and I'll share this video. And do let me know that do let me know if the voice is clear from the video. Broadcast at this point in just let me know if you can hear, okay? time, in a fresh twist to Sushant's death probe, Ria's pictures with a mango cake have thrown open questions about her claim that she never. Sunai de raha hai? If people can confirm, then we'll proceed further. And I'll tell you why I'm showing this. Because, yeah, perfect. There were a lot of things that happened. Channels like Times Now, channels like Republic came out with a lot of explosive revelations. But at the end of the day, होता क्या है कि इतने सारे rumors spun कर दिए जाते हैं, इतना confusing बना दिया जाता है सारे situation को कि it gets really tough for one to understand that what's right and what's not. So in order for us to understand, we have to see all the possible available evidences on in the open source, and then we need to come to a decision. Just because there is a rumor that वो एक मेका post है या हो सकता है, we should not discard the probability of it being a post from June 12th itself, because रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में भी ये 12 जून को पोस्ट होता है, और जो श्रुति मोदी की बेकरी का अकाउंट है उसमें भी ये 12 जून को ही पोस्ट होता है. Else it would have been posted in the month of May. मुझे कोई reason समझ नहीं आता कि if they are publicizing or marketing their product, if such a product has been made, then why did they take at least 30 days or 15 days or whatever to go ahead and upload it to the bakery's Instagram account? Because if I am a talent, if I have a bakery shop, if I have made a cake, I'll ensure that it's marketed to the best, So there we go. Let's proceed with the video and let's see what this video has to tell us. Saw Sushant after June 8th. Times Now has got hold of an Instagram post where Ria's picture with a cake was taken on June 12th at what appears to be Sushant's home. So this is a fresh twist to Sushant Singh Rajput's death probe. Ria Chakrabarti, remember, claimed that she left Sushant Singh Rajput's house. Now, can you see June 12th? This is what I'm talking about. Okay, let's proceed. And what it's written, making the most of mango season. Had it been May, why would they have not marketed it in the month of May itself then? On the 8th of June. And now these pictures definitely punch a hole in the theory. In fact, let's take a look at some important information. And the picture here on the big screen, this is Ria Chakrabarti here in the picture along with her birthday cake. Now we're being told that this picture was clicked at Sushant Singh Rajput's house. The place where the picture was clicked was Sushant Singh Rajput's house. This is an Instagram post where Ria Chakrabarti was posing with her birthday cake. Now Ria Chakrabarti says that she left Sushant Singh's house on the
8th of June, and then she did not speak to Sushant Singh Rajput because apparently he never called her up, and she was angry and she had blocked his number, and then Sushant tried to establish contact with Ria's brother. But according to this picture, it looks like she definitely was in touch with Sushant Singh Rajput. The date here is very important. This is Ria Chakrabarti posing with her birthday cake, and this was posted on the 12th of June. It is now being said that the picture was clicked at Sushant Singh Rajput's house. Here's another picture of Ria Chakrabarti on Instagram. Let's go across to Kajal, who continues to be with us. Kajal, the date is very important, June 12th, when the picture was uploaded. Two pictures, Ria Chakrabarti posing with her birthday cake. She said she left Sushant's place at on 8th of June. But these pictures suggest that they were clicked on the 12th of June at Sushant Singh Rajput's residence. Another discrepancy, isn't it, Kajal? The CBI will, of course, have to find out what this is. The post is, of course, dated June 12th, but the CBI will have to question them on when exactly. Okay, एक second. I just need to exit full screen. Okay. I just need to stop the sharing. Perfect. So as I was saying, even news channels picked it up. Okay. Even news channels picked it up, and that is when the rumors started to spun out, stating that, this picture was old. And are we expecting truth out of Shruti Modi at all? A character who, just to save herself, went ahead and simply, helped us knowing a lot of things, wherein she spilled the bean. Well, I hope you guys know what I'm trying to say, because just a moment, because of the fact that okay, I was just distracted by one of the comments. I would address that. Okay, so the reason why I think and I don't trust Shruti Modi the most is because वो अपने आप को बचाने के लिए she would certainly put people under the bus, and she has done it. Her lawyer Prati, his first name I don't know, the last name is Saraugi. He specifically named Imtiaz Nisar Khatri, INK. कि जितना भी drugs Ria used to procure, used to get it from them out in the public. News channel पे उन्होंने ये अपनी testimony दी है. But I don't know कि क्या चल रहा है और क्यों सब चुप हैं. But ठीक है, the agencies might be trying their best to nab these people with strong evidences in hand. Agencies से याद आया, if you guys know, today unfortunately a decision came out that Sameer Wankhede's extension was not accepted. You guys know the kind of fire that we had in terms of writing emails to PMO, HMO, and giving them calls and ensuring that activities were being done. So we need to ensure that we keep on stressing, because now we need to also minutely check कि जो नए ऑफिसर आएंगे वो क्या करते हैं. अभी तक it's not 100% sure कि Sameer Wankhede would be taking care of the case. Rudraba, if you're watching, if you can confirm that. I did hear that उनका extension हुआ नहीं for some odd reason. Okay. Okay. Thank you, Bharat. Just asking any reasons you and Raj making separate YouTube. I know. ये channel मेरा और राज का ही है. Rajat is traveling आज, Savita ji. He is traveling. He is out for next 7 days. So 7 days tak I'll be doing monologues and he'll be back on 10th. That's how the plan is. क्योंकि वो travel करते हुए live आना could be a little problematic, because जिस area में वो है वहाँ connection is not that good. They never expected that public will be outsmart. Exactly, Archana. I mean, that has been happening since day one for the last 1.5 years, as we are seeing. Every day or the other, something new pops out. Even we didn't we didn't anticipate the fact that अभी हम जो पिछले 3-4 सेशंस किए हैं जहाँ पे हमने 2 bodies रूम के अंदर भी दिखाई है और 2 bodies कूपर में going in a stretcher भी दिखाई है. A lot of things were missed, but now when we get into it, we actually try and understand, okay, this happened and this happened. So it's a good thing that we have started getting into the minutest of details, because they are important. Bharat, when did Mitudi left on 12th June timing? Yeah, exact time, Ravi Teja, it's a really good question.
I'll certainly get back to you on that because I don't know the exact time ki 12th ko kitne baje. Most probably in the daytime is what I reckon, but again, that's a speculation as of yet. Let's see. As soon as I get the confirmation, I'll be going ahead and like uh, giving out the information about it. Okay. And Rudaba, do we have an idea who's replacing Mr. Wankhede? We'll also have to wait and check a couple of things there. Okay. Now, proceeding further. 13 जून केक रिया. चलो एक चीज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है. आप लोगों को याद होगा एक बार सुरजीत सिंह राठौर ने, उसके बारे में आएंगे हम आज, लेकिन उसने एक चीज बोली थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि रिया और सुशांत वर टुगेदर ऑन 13th फॉर सम ऑड रीजन, राइट? बट उसने कोई प्रूफ नहीं रखा था, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड check one thing. I like to share this with you. Okay. So it's not just Surjit Singh Rathore who mentioned that Riya and Sushant were together, but one of the neighbor as well. And how come? I have no idea. Let's see what this particular article has to tell us. Neighbor who claimed Riya was with Sushant Singh Rajput on June 13 grilled. So the neighbor was grilled by CBI for sure. The Central Bureau of Investigation probing actor Sushant Singh Rajput's death case on Sunday recorded the statement of actor Riya Chakrabarty's neighbor Dimple Thawani, who has been claiming that she saw Riya and Rajput together on June 13th, said sources. Rajput was found dead in his Bandra flat on June 14th. Sources said that when the CBI officials questioned Thawani, she said that she never saw Rajput and Riya together on June 13th, but had heard someone saying this. So first, she claims very audaciously that like Riya and Sushant were together. But when she was called in for grilling, she simply changed her stance by stating that, I didn't see them. I heard it's a hearsay that they were together. So again, I guess maybe some kind of threat tactic might have worked here. Could be, right? Because they also have to stay in the same vicinity, survive there. Okay. CBI spokesperson R.K. Gaur, however, refused to confirm if Thawani was questioned. The CBI investigation related to the death of Sushant is still continuing and all the aspects are being looked into meticulously. एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, people, if you see, CBI spokesperson refused to confirm if Thawani was questioned. Now, despite of Thawani being the neighbor and despite of she going ahead and telling that they were together, why would CBI out blatantly deny that मैं उस पे कुछ बात नहीं करना चाहूंगा या हम उस पे कोई comment नहीं देना चाहेंगे? Because could be a possibility कि this is something which could impact the investigation. So something they might have got here. That's my take, people. I mean, that's my take. It could be else. It could be either ways. It could be of no use as well, irrelevant but relevant too. Because not just the cake theory, but the like neighbor theory also claims that it's a hearsay that Sushant and Riya were together. And I believe that on 13th, Riya did enter Mount Blanc. Okay. Claiming that Thawani had lied to electronic media, Riya's lawyer Satish Manashinde requested the CBI to take legal proceedings against those who misled the investigation. In a text message to media persons, he said, "We will start going after people who defamed and tried to destroy her life." Oh my God. Chudail ki life destroy kar di humne. Same. Dimple, who claims she is an SSR fan and believes she is his soulmate due to a past life connection. यहाँ पे थोड़ा हम राब्ता की ओर जा रहे हैं. She claims that someone told her that SSR dropped Riya home on June 13th. Now, as I hear this, obviously it's a spun out rumor. It's a well spun out rumor because of the fact कि पहले तो इन्होंने बहुत चौड़े में बोल दिया कि वो लोग साथ थे. जब CBI ने बुलाया तो इनका जो statement है, इनकी जो testimony है, that matches exactly with what matched for Surjit Singh Rathore, if you guys remember. आएंगे उस पे. So remember this name Thawani.
And abhi jab hum Surjit Singh Rathore, when we will reach 15 June, we'll talk about this, that what exactly I'm referring to or what exactly I'm trying to say could have happened here. So this is something which people I would, you know, request you guys to stress a little bit upon. It has little details, but it certainly makes a lot of sense, because the cake theory is not just the one thing that is implying or indicating towards Riya Chakravarti being present on 13th in Mount Blanc, but also the fact that one of the neighbors went ahead and said that, it's a hearsay. Pehle she said ki, like she saw them. Then the second time she said it was a hearsay while the CBI was questioning. So there was certainly some attempt, एक छोटा सा अटेम्प्ट मुझे दिखता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, और जो केस ऑलरेडी जिस तरीके से ये बॉचअप्स कर रहे थे बाय स्पनिंग रूमर मिल्स, it just went on and on, went on and on. So I'm my take on it, I feel that I certainly feel that uh, like she was there because of the kind of statements that we have received, and also the fact that this Thawani lady was actually might have been threatened in order to not go ahead and spew any other information out in the media, and that could be one of the reasons why she suddenly switched, just like a lot of people took U-turn. ठीक है. Now, लोगों का कहना है कि सुशांत 8 तारीख के बाद इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था. He was scared for his life. He was like, like they would kill me. You know what I feel? I feel that Sushant never knew that this would happen with him. Sushant, being a Bihar ka garam khoon, he would have simply taken a stand for Disha, and he would have simply gone on to contact whatever news agency he might have for the press conference, and he might have not known about what was about to happen, because बहुत सारी चीजें were being controlled by इसके ये जो नौकर थे. मैं अगेन फ्लैटमेट्स आई वोंट यूज, नौकर जो थे, इन्होंने they played a major part, according to me, they played a major part in ensuring that Sushant doesn't, gets to know a hint of it and make him believe that everything will be fine. And as soon as Meetudi left, they took the advantage and they executed him. That is what has exactly happened in this particular case. Nothing else. It's pretty clear. See the timeline. खुद मैच करके देखो, खुद सिंक्रोनाइज करके देखो, एंड यू वुड गेट टू नो, बिकॉज एवरीथिंग एक एक दिन की एक एक इंसिडेंट को चार अलग अलग थ्योरी सपोर्ट कर रही हैं. तो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना. देयर सर्टेनली हैपेंस टू बी a lot to read between the lines. चलो, कहते हैं सुशांत was depressed. सुशांत कह रहा था मुझे भी मार देंगे, ये कर देंगे. तो मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, मुझे भी मार देंगे एंड मेरे साथ बुरा हो जाएगा, इन सब के बीच में अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो व्हाट वाज दिस? लेट्स रीड. ओके. All right. Sushant Singh Rajput was normal on June 13th and was on a con call with filmmakers Nikhil Advani. Ramesh Thorani reveals his talent manager. His talent manager, once again, people remember the name Uday Singh Gauri. A very colorful character, a character to talk about, a character to look at. We'll talk about this person a little more. But before we proceed, let's go through this particular article and let's see what he has to say. Okay. The death case of Sushant is revealing new matters every day. Absolutely, it still is. After his father lodged an FIR. Okay. All right. We ask government requests. Many leading news channels of the country are trying to speak to the Vijara actors' acquaintances. And okay. All right. Okay. Here we go.
Lately, while giving an interview to Times Now, Uday Singh Gauri, the talent manager of Sushant, shed light on the fact that the late actor was quite normal a day before his death. He added that the Kaipo Che actor was on a con call with popular filmmakers Ramesh Taurani and Nikhil Advani and was very keen on knowing the entire script. The late actor asked some relevant questions and shared his 2 cents on the script. Uday Singh further added that Rajput was very normal throughout the conversation. The Chichore actor's talent manager closed out the two possibilities about the actor through his interview. One possibility was about the actor being depressed, as I just mentioned, and the other being the Bollywood industry isolating him and giving him no work. Because things, if you guys remember, things started to change for Sushant at that time because of the fact that Dhoni and Chichore had become a blockbuster in box office. And that could be one of the reasons that he was getting offers. And if you also remember, there was this one more producer. Uh, I'm it's skipping out of my mind. Uh, he was ready to go ahead and make a movie with Riya and Sushant together. That was also in play. So again, the whole depression theory is just a spun around rumor. According to Uday, on his call with filmmakers Nikhil Advani and Ramesh Taurani, Sushant liked the story and asked for a script. And if you remember, there was also a news wherein Sushant went ahead and spoke to a couple of people and stated that, I'm happy, and also to the family, I'm happy that I've got a movie now to work on. The amount uh, that he was about to receive, yes, Rumi Jaffrey, exactly right, Surbi, I got it. So the amount that he was about to receive was 15 crores, if we guys remember, for this particular movie. Okay. Now, meanwhile, after CBI has taken over the death case of Sushant Singh Rajput, they have registered an FIR against Riya Chakravarti. Okay, blah 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 blah. Da, 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 da. Got it. Now, this very well goes ahead and tells us that Sushant was very much looking to work, very much loving the story that was being offered to him. He was very much looking to live another day. And at the end of the day, the story that spuns out states Sushant was done. उसके tweets कहते हैं कि I am done. But he was actually enjoying his life, wasn't he? Just because of the fact he wasn't much because of the fact that he was being, like allegedly given psychotropic substances by Chudail and घर के सारे नौकर. But again, he was still trying to live it out, still trying to survive as he was a warrior. And I just regret the fact that he did not take that split second decision to simply pick up the keys of the car, get in the car, and just drive away to a different city, to elsewhere, cross the states. That is something which he should have done. But he might have certainly thought about safety and security of me to the end family. So a lot is there, a lot to think upon. Why he didn't go anywhere? Why did he stay if he knew? According to me, he didn't know that something would happen with him. According to me, he knew that whatever has happened with Disha, he was very much, amped up in terms of going ahead and speaking to press conference in order to ensure that, he goes ahead and exposes these people. But at the end of the day, hua kya? He was just unaware. And हमें इतने rumors मिलते हैं. एक प्रॉब्लम हमारी भी है कि एट द एंड ऑफ द डे वी गो अहेड एंड समहाउ ट्राई टू, आई वोंट से कि वी डू 100%, बट जब कोई भी एक रूमर आता है ना, तो एक जो यूनिटी होती है ना पीपल, जस्ट ऑलवेज रिकॉल दिस पैटर्न. ओके, जब भी हुआ है, जब भी कोई नई न्यूज आई है, हमेशा उसके दो पहलू निकले हैं. ठीक है, वो जो टीम है, जो एक टीम है, सपोज ये 10 लोगों की टीम है, एक रूमर आया कि वो नहीं मई की फोटो थी, जून की फोटो नहीं थी रिया चक्रवर्ती की केक वाली. 5 लोग हट गए कि वो मई की फोटो थी, 5 लोग हट गए कि वो जून की फोटो थी. माई एंटायर आइडिया इज पीपल, अगर हम ये 5 और 5 दोनों को एक करें और सारे के सारे 10 ये सोचे कि हो भी सकता है वो जून की है, हो भी सकता है वो मई की है,
तब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, and that is how the numbers would grow. So I would request everyone to have open minds towards everything that is happening. जो भी न्यूज आ रही है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है? अच्छा ठीक है, संदीप सिंह वहां पे आया, संदीप सिंह क्राइम सीन में था, क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है? संदीप सिंह के साथ कौन कौन था? अच्छा, मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट संदीप सिंह वेंट बिकॉज ऑफ संजय निरूपम, मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट संदीप सिंह वेंट बिकॉज ऑफ महेश शेट्टी. Both could be true. But where we are getting divided, where this campaign or where this particular fight of justice movement is falling short, is because when a news comes, we divide. If we stay together and think of all the possibilities with an open mind, then I guess, we would actually make a big difference, a really big difference. I hope I'm making sense, people. If not, please correct me. I'm open for all kind of feedbacks. And hello, Judy ji, thank you for coming in. स्मिता SSR ने भागने का कोशिश भी की होगी तो उनको ड्रग्स दिया होगा. Exactly my point. Because as far as I remember, उनकी एक last days की video है wherein he is talking to a friend, and he actually was explaining him about how his telescope works, about stars, the formations. You should look the deep black dark circles beneath his eyes. That doesn't come by oversleeping people. That doesn't. Or that doesn't come by being an insomniac. Even a person like me, I sleep for like 4 or 5 hours. Sometimes I sleep for 15 hours. I too have dark circles, but the one that he had during that particular video was something else. He was being there is a video, Surbi, if you remember, of Sushant explaining someone about how the star formation work, how his telescope works, and everything. It's an evening timeline of a video that I have. मेरे पास होगी तो मैं वो upload करूँगा. But I just refrain from uploading such kind of videos of him, on this channel. However, there are a couple of good videos that I've found. Tomorrow, you guys are gonna love it. Moving further, so as I was at my point, rather than dividing, we have we have an open mind towards all possibilities. We join in numbers, we join in particular numbers, and then the impact would be different. It would be powerful because it would not be 5 into 1, it would be 5 into 2, which is 10. Normal mathematics. And not just dark circles, he was also very anxious in terms of talking. A little bit of breathlessness was there, a hint of breathlessness and a lot of things. So yeah, in the balcony, exactly. Yes, Chandrika, that was the video that we are talking about, wherein he's explaining about the formation of stars and all. So again, looking back at everything today, what I feel is that he was being given psychotropic substances, and that could be one of the biggest reasons that even if he wanted to, he could not run away. So Mitudi left, and since then, I guess everything started. Judy ji, Bharat, everything is so messed up in SSR's case. Which party is using who to get to the top of the ladder? See, Judy, I agree with you. I completely agree with you that there are a lot of, political games going on in the name of this particular case. There is a party that want to, capitalize using this case, capitalize their win in BMC elections. There is a party who is trying anyhow that this case doesn't come out, and they are putting in n number of money without even thinking left, right, and center, right? So this is going to go on. See, I won't give you false hopes, people. I'll be very blunt. I'll be very upfront. अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 साल में 2 साल में जस्टिस मिल जाएगा, प्लीज डोंट. We have to go ahead and make up our minds in such a way that we have to be mentally prepared to ensure that this fight is at least 5 to 7 years long, and that is when you can expect to see justice.
बट वो जस्टिस के प्रोसेस का स्टेप 1 तो स्टार्ट हो. जब स्टेप 1 ही स्टार्ट नहीं हुआ है तो कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है. People getting the final sentence, be it death sentence or be it umar kaid, वो बहुत दूर है. And I blame BJP equally. I do not only blame MVA, I do not only blame NCP, I blame BJP equally. If they could have, they would have simply taken care of this particular case. मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को अभी तक पता नहीं होगा इस केस में क्या हुआ है. But what I feel is BJP is waiting for something, some good time, because everybody knows the kind of people who are involved. If they touch them, Maharashtra jal jayega, big time. So there are a lot of लोगों का कहना है कि there is a lot of interference which has been happening, diversion tactics use हो रही हैं. पहले वो farmer protest हुआ, फिर उसके बाद 26 जनवरी को वो उनकी रैली हुई, फिर उसके बाद कुछ नया होते गया. So they have not given a chance for the center government to even breathe. I'm not defending the central government. I'm still blaming BJP. But BJP being in the central government has to take the onus of this case. हम कितने हजारों लोगों ने यार पिछले 1 महीने से हम समीर वानखेड़े के लिए लगे हुए हैं. उन्होंने तो अनहर्ड कर दिया. इट्स लाइक दे डोंट इवन गिव अ डैम कि उन्हें क्या लेना देना है. ऑल दे डिड इज, ठीक है भाई ये प्रोटोकॉल है, वी जस्ट हैव टू चेंज मिस्टर वानखेड़े फ्रॉम देयर, नो मैटर जनता क्या कह रही है. जनता की नहीं सुनोगे तो फिर कंट्री कैसे चला रहे हो, और किसके लिए चला रहे हो? अपने बच्चों के लिए जो आए दिन किसी का भी रेप करके किसी का भी मर्डर कर देते हैं, और फिर बोलते हैं ये है इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मुबारक हो. So to bring a change, we have to change ourselves within first. So again, I'll repeat the same thing, not the division. Stay together, be open with accepting all kind of probabilities. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. Have good discussions, healthy discussions amongst people, amongst peers, so that something new comes out. Because a lot of times it happens that session में हम किसी चीज पे बात कर रहे होते हैं, and because it's not a two-way conversation happening, it's a monologue. So we just get the fact कि okay, जो हम बोल रहे हैं हम बस वही convey कर पा रहे हैं. But there are a lot of points that I have missed while explaining these. And when this turns into a conversation, then it gets productive. So rather than focusing on individual efforts, let's all get together, join in numbers and collaborative efforts डालते हैं. मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं ये करता हूं, तू उस चीज में अच्छा है, तू इसको वो कर, फिर हम इन दोनों को मिला के we'll enhance it. That is how it goes. And that is how we can actually move towards the win. Okay. I'm sorry. Yeah, I was just trying to explain people key what is happening. Okay. And so let's proceed further. There are people already giving me advices ki aage badho, stuck mat ho. Sahi baat hai. All right. So I'll just quickly share the screen here. I wanted to go ahead and talk a little more about Sushant Singh Rajput's manager in the absence of Shruti Modi and Disha Salian then was Uday Singh Gauri. So let's go ahead and I'd like to show you that. Just a moment. Okay. I'll just share something. Okay, I'm just opening that particular article. People, apologies for this. और अगर हम इन इंफॉर्मेशन को बार बार जाके वापस से नहीं देखेंगे तो हम भूल जाएंगे, जो हम ऑलरेडी कितने टाइम से करते आ रहे हैं. तो या तो आप आवाज उठाओ, और अगर कोई उठा रहा है तो उसे मत रोको. आपको अगर नहीं पसंद है कोई आवाज उठा रहा है तो you're free to leave. It's a free world. Okay. This particular article
which was on Republic. It was dated September 16th, 2020. Sushant Disha death case, talent manager Uday Singh Gauri's June 13 calls under CBI lens. Okay, why is this so important? According to the call record data accessed by Republic TV, Uday called Sushant 5 times in 7 minutes on June 13th. Uday spoke to Sushant for 368 seconds on June 13th. So, in these 5 calls, the total time was 368 seconds. तो इतने छोटे छोटे 5 कॉल तो कोई तभी करेगा ना जब वो किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि यहाँ आ जाओ ये कर लो, right? Now there is one question: what if he didn't know he was being given the medication? I'll tell you one thing. Okay, uh, तुम लोगों को याद है समी अहमद? It was Sushant Singh Rajput's trainer, gym fitness trainer, who literally mentioned the fact that he knew that he was given some wrong medications and he used to avoid them. So Sushant literally knew कि उसको जो medications दी जाती थी, अब यार पानी वानी में पिला के जो सामने से दे दी, he could not deny that, right? He would have to drink that water. Otherwise, they would get to know कि Sushant knows, right? So let's proceed further. The Central Bureau of Investigation investigating the Sushant Singh Rajput case is probing more links related to the death of his former talent manager, Disha Salian. Sushant's talent manager, Uday Singh Gauri's June 13 calls with the late actor has some under the spotlight, according to sources. Now, as we know, in the 24-hour window, there was a 649-second call between him and Ria as well. So not only did he talk with Sushant 5 times, 5 times in a 7 minutes, within 7 minutes for 368 seconds, he also has CDR records that reveal that there was a 649-second call between him and Ria on June 9th, a day after Disha Salian's demise, and within the 24-hour window when she left his house not to come back. तो अगर he was going ahead and speaking to Sushant, 13th को coordinate कर रहा है, तो after leaving Sushant's house, what did Ria has to do with Sushant's current manager who replaced Shruti Modi? Was Ria the like an employee of was Uday Singh Gauri reporting to Ria so that she would have called him to know what's happening and what's not? Now, the sources also suggest that Uday Singh Gauri had close links with Cornerstone CEO Bunty Sajde. Bunty Sajde was the CEO of Cornerstone and also brother-in-law to Sohail Khan. Sohail Khan. हम बंटी सिजदे की बात तो ईडी वाले एपिसोड में करेंगे, बट वन थिंग दैट आई लाइक टू हाईलाइट हियर कि उदय सिंह गौरी was also in touch with Sushant and was also in touch with Ria at the same time. So Uday Singh Gauri is someone who really needs to be put under lens equally like the way we expect like the way we expect Rohan Rai to give testimony for Disha. Uday Singh Gauri is that important because 13th June, the last day when Sushant was ever active on phone, he called him 5 times within 7 minutes. So this is a confusing number for me. 5 times within 7 minutes, small calls. What was he up to? Haripriya, Bharadra, if I can ask what happened to the witness. Bro, we have already gone ahead and given everything that was supposed to be given to the agencies. One more time, and I'm clarifying it for everyone. मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं उसमें घुस के पूछूं क्या क्या नहीं, या फिर एजेंसी ने क्या क्या उनसे लिया, क्या क्या नहीं लिया. मेरा काम था उनको एजेंसी तक पहुंचाना, उनको फैमिली तक पहुंचाना. हमने हमारे सोर्सेज से जितना कर पाए हमने कर दिया. उसके आगे ना हम कोई स्टोरी फैलाना चाहते हैं, ना हम उनकी बात करेंगे. हमने हमारा काम कर दिया जो करना था. उसके आगे हमको कोई बिग ब्रेकिंग, कोई रेवलेशन, कोई कुछ नहीं चाहिए. नो, we will talk based on facts in the open source. ऐसे तो मेरे को 10 चीजें और पता है, बता दो क्या? ऐसे नहीं होता यार. I can't speak on anything until and unless I have fact. रही बात वो witness recording की, it was supposed to be
वो निकाला ही हमने इस रीजन से था क्योंकि ये कैंपेन बहुत ज्यादा शांत हो गया था. आई एम सॉरी, आप जो भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो एजेंसी से थ्रोन आउट हुए हैं, हैप्पी, यू कैन लीव मैम, नॉट अ प्रॉब्लम. बट या, हमें जो करना था हमने कर दिया. सुनील सर कह रहे व्हाट इफ द कॉल वाज नॉट कोऑर्डिनेशन बट वाज एन आर्गुमेंट. कुड बी, वेरी ट्रू. I agree. I second the fact कि it could very well be an argument. See, argument as in he might be saying do this, he might be saying no, I won't do it. But again, argument would still take a little longer, I guess. It might be talking about, it might be going ahead and giving him some ways कि यहाँ से left, यहाँ से right, could be just a speculation. तो वो बात तो यार सीबीआई को ही पता है कि क्या हुई है, या फिर उदय सिंह गौरी को पता है. But Uday Singh Gauri is a character to be put under lens once again because he's also connected to Bunty Sajde, Cornerstone, ED angle, जो बहुत अच्छे से खुल के आने वाला है आगे, and also the fact that he was simultaneously in touch with Sushant and Disha both. Now, coming back to, एक second. But argument will be longer, right? Yes, argument would be longer. अरे यार, देखो यार मैम, प्लीज प्लीज, हाँ, बख्श दो हमें केस से करने दो जो करना है. हम जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है हम वो करेंगे. आप प्लीज पुरानी बातें और ये फालतू की चीजें यहाँ पे उठा के मत लाइए. आपका एजेंडा हमें पता है, ठीक है? थैंक यू. Mr. Nothing, CBI, why CBI is silent? I'm sure they know by now कि क्या हुआ होगा इस केस में. I'm sure उनसे अब तक छुपा नहीं होगा. 1.5 साल is a very long time यार. They certainly would know. Okay, now the thing is that why CBI is not coming out? Again, political games. आगे बढ़ते 14 जून की तरफ. हमने 13 जून में देखा कि 13 जून को रिया का केक, रिया के सुशांत के नेबर का टेस्टिमनी that Riya and Sushant, it's a hearsay that Riya and Sushant were together, and post that Uday Singh Gauri की ये movements. And we also know कि शाम को और इनफैक्ट दोपहर को 3 बजे के बाद ही सुशांत का फोन वेंट इनएक्टिव. उसके बाद से इट वाज नॉट एक्टिव. एंड ये इनएक्टिव होने से थोड़े टाइम पहले का ही एक वो स्पैन है. इनएक्टिव होने से बहुत ज्यादा थोड़े टाइम पहले का ही स्पैन है जहां पे उदय सिंह गौरी की कॉल्स हैं वो 7 मिनट के अंदर 5 बार. Okay. Heard that CBI has already submitted the closure to Supreme Court end of January. There will be some news. Hope it is the case. Archana, I would be, really happy if CBI has done it. I would be glad. I would be enthralled that CBI has done a great thing if they have already. But let's see how it plays out, how it rules out. कि क्या होता है, क्या नहीं होता है. All right, people, let's not poke other people in the chat. Let them be. And if they want to watch, let them watch. If they want to go, let them go. Let's proceed further. 14 जून की हमने इतनी सारी बात करी है रजत और मैंने पिछले सेशन में. We covered almost everything. But एक छोटी सी चीज which I'd like to focus on again, which would be important for us to see. Hear what's exactly happening. Okay. Let me open this article and let me share this with you. ये बहुत ही ज़्यादा basic information है which we all know about and which this particular Sandeep Singh needs to be questioned about. Yes, Sandeep Singh, up man, he has been, managing the scene, spoiling the scene, doing botch ups, everything in the best possible manner he can. So let's check on one particular botch up that these guys did, Sandeep Singh and Sanjay Nirupam. Okay. So, Congress leader Sanjay Nirupam's link with Sushant's self-proclaimed close friend, Sushant's self-proclaimed close friend. A shout out to Republic. बहुत अच्छा लिखा है. I love it. Sandeep Singh have come under focus as the call for the arrest of Sandeep grows louder with each passing day. On Tuesday, Republic TV
accessed call records of Sandeep Singh that showed that there were 28 calls. 20, okay. 28 calls lasting for 9,494 seconds total made to Sanjay Nirupam between the period of November 2019 till July 2019. Okay. Earlier on June 17, Sanjay Nirupam via a tweet had lauded Sandeep Singh for arranging the autopsy of Sushant. The Congress leader had also claimed earlier that Sandeep was with him at the time of newsbreak of Sushant's alleged suicide. Now, if you guys remember, संजय निरुपम ने ऑल्सो एक मीडिया चैनल पे ये बाइट भी दी थी ये कहते हुए कि संदीप सिंह मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे थे जब उन्हें ये कॉल आया एंड उन्हें जाना पड़ा उनके जाते हुए मैंने बोला अगर मेरी ज़रूरत होगी तो बताना ठीक है नाउ द थिंग इज यहाँ पे संजय निरुपम स्टेट्स कि ये इनके साथ थे however Sandeep Singh goes to Republic and other channels and simply states that Sandeep Singh कहता है कि I was with Mahesh. I was at my home. Mahesh Shetty gave me a call. Then I came down and then I came with Mahesh Shetty. No discussion or no name of Sanjay Nirupam was taken ever in Sandeep Singh's testimony at all. And why is that? And why is Sanjay Nirupam, this double-faced guy, is promoting this man just 3 days after Sushant's demise? A friend in need is a friend indeed. We all must appreciate Sandeep Singh, who stood by the family, despite of the family not knowing him, who went ahead and became a crisis manager, wherein he was never ever wanted, like a rock in the most critical time. They were old friends. Self-proclaimed friend is like Sandeep Singh for me. So, in a major breakthrough, Republic TV on Tuesday, access call details of Sushant Singh. Okay. This is also important. Interesting that we have this. Okay. In a major breakthrough, Republic TV on Tuesday accessed the call details of Sushant Singh Rajput's self-proclaimed friend once again. Shout out to Republic. Yeah. Self-proclaimed friend Sandeep Singh, which highlighted that 4 calls were exchanged between him and the ambulance driver between June 14th to 16th. Now, could be for various reasons. Sandeep Singh has mentioned it was for payment, could be anything. To add to the intrigue, the ambulance driver sheepishly deflected and denied any knowledge of this despite having called Sandeep 3 times. Now, the thing to ponder here is that Sandeep ki CDR mein ye calls hain, but why did ambulance driver denied of going ahead and taking those calls? The record details also showed that the calls that were made by Sandeep Singh to Congress leader Sanjay Nirupam and actor Suraj Pancholi's mother Zarina Wahab. Why is this name coming over and over again? A figure like Suraj Pancholi walks out of Mount Blanc. A figure looking like Suraj Pancholi walks out of Mount Blanc on 14 June. Now, Sandeep Singh is also in touch with Sanjay Nirupam and Suraj Pancholi's mother, Zarina Wahab. So again, couple of new things came up, couple of new names came up. The call records show that on June 14th, ambulance driver Akshay Bangar dialed Sandeep Singh at 6:40 p.m. and had a 48 seconds conversation. He made a second call at 7:57 p.m. and spoke to him for 51 seconds. The call records further show that Sandeep made the third call to the ambulance driver at 9:59 p.m. on June 14th. Sandeep Singh again spoke to the ambulance driver Bangar for 114 seconds on June 16th after Bangar called him. अब मुझे एक बात बताओ, अक्षय बानगर की एम्बुलेंस यूज हुई थी 14th को, ठीक है? अगर मेरी एक एम्बुलेंस है तो आई वुड नेवर वांट टू कलेक्ट द मनी much more later than the next day, which is on 15th. 15th को जो एम्बुलेंस यूज हुई थी वो थी मॉर्चरी की. That was a different ambulance. It did not belong to अक्षय बानगर. मान लिया कि 14 तारीख को 4 कॉल्स हुई जिसमें पेमेंट की भी बात हो गई होगी. But the one call that I'm unable to digest or fathom is this 104-second call which was made on June 16th. And on top of that, the ambulance driver Akshay Bangar rejects these call details.
Even as call details were accessed between Sandeep Singh and the ambulance driver, sensationally, the ambulance driver claimed that he doesn't know who Sandeep Singh is, saying that the Mumbai police had called him. अगर मुंबई पुलिस ने कॉल किया अगर मुंबई पुलिस ने संदीप सिंह को कॉल किया है तो यहाँ पे फिर ये क्यों दिखा रहा है संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड सॉरी मुंबई पुलिस ने अक्षय बानगर को कॉल किया है तो संदीप सिंह के सीडीआर में अक्षय बानगर क्या कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस आई एंड just after a week from this ban, Akshay Bangar had a silver Royal Enfield which was paid in cash and bought by him. And if you guys remember, कल हमने एक चीज शेयर करी थी कल नहीं हमारे 2 सेशंस पहले if you go to the third last session you would see an article that we shared. It clearly stated Sushant Singh Rajput's niece mentioned that we never knew Sandeep Singh. It was just that Mitudi was so broken and so shocked that she needed someone to take care of him. So this Sandeep Singh, this Sandeep Singh really needs to be shown his place. क्योंकि आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं हम सबको पता है जितने भी लोग इस केस से इन्वॉल्व थे इस केस में कहीं से भी कैसे भी रिलेटेड थे आज की डेट में सबको काम मिल रहा है अक्षय बानगर ने एक नई एम्बुलेंस खरीद ली रॉयल एनफील्ड तो ली थी तो इन चीजों के होने के बाद because of the fact that CBI entered late, I don't know whether CBI was able to crack him open or not. I'm sure they would have been able to, but now it is the time that the agencies need to come out with what they have. Otherwise, people are getting into two thoughts. And it's agencies' responsibility to ensure that whatever it is needs to be shared. Because Sushant Singh Rajput was a public figure and we have a right to know it. I know we are not his direct family, but we are his extended family. And we demand status from CBI, from ED, क्योंकि ED ने जब लास्ट बंटी सिसदे को कॉल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था रजत मेवाती को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था अलॉन्ग विद राज कुंद्रा उसके बाद से तो चुप है ED उसके बाद से बस प्रताप सरनायक को 2 समन्स भेजे थे जो वो मिस करता आ रहा है एंड ईडी हैज बीन क्वाइट एंड नो वन इज like giving two hoots about this case. So that again is questionable कि 14 जून को इतना सब हुआ अब एक और चीज दिखाता हूं मैं let me show you something more मतलब एक और प्रूफ इनके okay just a moment. Apologies for this, people. अब अगर कोई बोलेगा कि जो आर्टिकल मैंने दिखाया वो तो रिपब्लिक का है एंड रिपब्लिक वाज ऑल अबाउट going ahead and bashing or trying to prove that this theory was wrong and there were botch-ups and discrepancies, then let me share the same kind of an article with Pink Villa as well. Because Pink Villa also had this information that Sandeep Singh's call records state he spoke to ambulance driver Sanjay Nirupam and Suraj Pancholi's mom Zarina Wahab. So it's not just one particular platform which is saying it, it is them all. आप और भी जाके अगर इंटरनेट पे ढूंढोगे आपको 5 अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपने आज तक पढ़े नहीं होंगे. So I would literally urge people to try take out half an hour or 1 hour every day. Okay, 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा शायद, आधा घंटा निकालो, पॉइंट्स याद करो. चलो आज मैं 14 जून याद करता हूँ, 14 जून को और क्या क्या हुआ था. Just go to Google, type that, go ahead and read the articles. कभी कभी while reading the articles, जब आप ओवरव्यू में देखते हो या फिर जब आप वीडियोस में सुनते हो तब आप काफी चीजें मिस कर जाते हो.
आर्टिकल्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है टू इंश्योर फॉर यू टू गो ahead एंड सी एंड अंडरस्टैंड कि ओके देयर वाज दिस एज वेल, देयर वाज दिस एज वेल एंड देयर वाज दिस. सो जब कॉन्ट्राडिक्शंस आए हैं तो कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए वी हैव आर्टिकल्स इन द ओपन सोर्स, वी हैव वीडियोज इन द ओपन सोर्स, वी हैव एवरीथिंग. And these are brutal murders, people. These are brutal murders. These are not just normal cold-blooded murders. These are brutal, and we'll know, we'll see how it was brutal. But before we go there, एक और चीज, संदीप सिंह के ऊपर हम एक बहुत डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे वेयर इन संदीप सिंह का पूरा ऑपरेशन होगा जून 14 से लेकर आज तक, कि आज तक वो क्या कर रहा है. हमने बात कर ली 13th की, हमने बात कर ली 14th की. 14th की और भी कुछ चीजें अगर मिसिंग होगी, आई विल बी कमिंग अप विद इट. बट it's my request to you all, please start going through the articles because articles are important. ठीक है? Okay. Now we go to June 15th. But before going to June 15th, I just need to check one small thing. Okay. Okay. जून 15 को जी बॉडी जाती है क्रिमेशन के लिए मॉर्चरी से. बट बिफोर द बॉडी गोज टू क्रिमेशन, मॉर्चरी में अचानक से प्रकट होते हैं कुछ लोग who are not family, but they are still given that permission to visit, जैसे कि उसके घर वाले. And let me just quickly share those pictures. Yep, there we are. एक सेकंड ना. There we go. Okay. I hope it is audible. I know it's not that clear. These are not good resolution pictures, but still. हम यहाँ पे देखते हैं सूरज सिंह. Suraj Singh, who happens to be founder of Dhoni Entertainment. I don't know what was this guy doing there at all. He was hand in glove with Sandeep Singh. जिस तरीके से you guys remember, right, कि 14 तारीख को संदीप सिंह कैसे एक क्राइसिस मैनेजर बन के चीजें संभाल रहा था. The same thing was done by Suraj Singh and Sandeep Singh on 15th June in the mortuary. Mortuary की अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देखोगे, Suraj Singh was giving indications on what next to do to Sandeep Singh, and Sandeep Singh was continuously on call. Continuously on call. Now, not just Suraj Singh, but we also see this lady. You एक second. यहाँ पे दिख रही है क्या? You see this lady with the chashma on her matha? Okay. This lady, this Jeev Jantu is known as Nidhi Parmar Hiranandani. I guess Mir Chandani or Hiranandani, कुछ ऐसा ही नेम है. ANI आता है लास्ट में. So we have Ria's father, we have the Chudail herself, we have Nidhi Parmar Hiranandani, we have Surjit Singh Rathor, and we have Suraj Singh. अब जब सुरजीत सिंह राठौर इन्हीं के साथ जा रहा है तो हम उस पर कैसे विश्वास कर ले एक आई विटनेस होने का. दिस इज निधि परमार फॉर यू पीपल. ओके. एंड दिस अगेन इज निधि परमार. सो शी is a kind of a person who might be getting Sushant and Riya together at a lot of occasions क्योंकि इनकी pictures बहुत सारी हैं. ठीक है. So I can understand Riya Chakravarti trying to go to mortuary to see his beloved Babu, as she mentioned him. I would not call him like that, but again, I'm just trying to give a reference here. जब रिया जा सकती है, रिया के फादर जा सकते हैं because बोलते हैं कि सुशांत was बोलते हैं, हाँ, he was close to her family because Sushant was any which ways a good human being. He was good with all the elders, no matter what. ठीक है. तो Sushant goes, ठीक है. So Riya is there.
सुरजीत सिंह राठौर का वहां पे होना मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता, मुझे ये इंसान प्लांटेड लगता है। और सूरज सिंह, सब द बिगेस्ट फिगर हु हैज नेवर बीन टॉक्ड अबाउट। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सूरज सिंह जैसा इंसान, इसके बारे में कोई न्यूज़ मीडिया ने भी बात नहीं किया। न्यूज़ मीडिया ने बस ये कह के इसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं यार, धोनी एंटरटेनमेंट सुशांत की बेस्ट मूवी का लाइक प्रोड्यूसर है, तो इनको क्या बोले, हो सकता है मदद के लिए आए हो। संदीप सिंह पे सारे क्वेश्चंस उठा लिए, बट व्हाई नॉट ऑन सूरज सिंह? बिकॉज सूरज सिंह वाज हैंड इन ग्लव। अगर आप 15 तारीख की मॉर्चरी की कोई भी वीडियो उठा के देखोगे, सूरज सिंह वाज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, जस्ट लाइक संदीप सिंह। And on top of that, the addition of people like Sanjay Nirupam, Vivek Oberoi, in Ranveer Shori, matlab, it was a clean up job, dude. For me, it was a clean up job, nothing else. Okay. Now, before we proceed further to this guy, Surjit Singh Rathore, first question, despite of Riya Chakravarti being a non-family member, how did she get an access to the mortuary in the Cooper Hospital? Cooper Hospital has no answers to that whatsoever. इससे पहले हम सुरजीत सिंह राठौर की टेस्टिमनी पे जाएं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लांटेड मुझे वो लगा था, a person who was trying to spun theories. Again, we'll know how, because the Thawani lady whom we spoke about, the neighbor of Sushant, we'll go ahead and match her theory with Surjit Singh Rathore, which would match exactly like it. Okay, so before we proceed further, हम एक और प्रूफ जनता के सामने रख देते हैं, जिससे ये श्योरिटी हो जाती है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। और वो क्या प्रूफ है, चलो देखते हैं। एक वीडियो है, एंड इट माइट बी अ लिटिल, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी तो मैं आई ट्राई एंड आगे करूंगा, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू शेयर. TV and Republic Media Network's hardcore investigative journalism has become a turning point in the Sushant Singh Rajput death case. Today, Republic TV's Anuj Kumar brings before you a testimony that is so explosive that it adds a new dimension to the entire case altogether. This is a man, and his pictures are on your screens. We've covered his identity because it becomes about witness protection. He was at the Cooper Hospital. So you guys can see here, I'll full screen it. अच्छा, फुल स्क्रीन वो ऑलरेडी है. ओके, सो यू गाइस कैन सी हियर दिस गाय, द वन जिसके ऊपर रेड एरो है, ही इज द गाय हु इज द विटनेस. सो ही इज द वन विद द कैप जो आपको मॉर्चरी की वीडियो में बार बार दिखेगा. सो लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से. हम सबने ये इंटरव्यू देखा है, बट आई एम गोइंग अहेड एंड पुटिंग दिस इन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जितने भी नए लोग इस केस से जुड़ेंगे, जो हमारा एम है कि rather than division, let us go ahead and believe in collusion. Let's collude with each other. Let's make this more stronger. Let's take all the open possibilities and put it into what I would call it. हम painting किस पे करते हैं? Canvas. And let's draw all possibilities there. Then maybe the voice would be much more stronger. So let's begin. Let's see what he has to say. And once again, putting it out in the public. Everyone have seen this interview, but this is a blatant proof that Sushant was actually murdered. There we go. Once again, revisiting the same video. On the 15th of June, when Sushant's body was brought in, he even claims he helped ambulance staff lift the body. His explosive testimonial, in this explosive testimonial, the man who was seen at the Cooper Hospital tells Republic TV that he heard doctors say this is a case of murder. I'd like to welcome our guests who are joining us on this broadcast. K.K. Menon, Senior Advocate of the Supreme Court, Neelam Krishnamurthy, who's been joining us on our panel, and someone रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद है इस समय, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं. ये वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जब उनकी बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लाया गया, तब से जब तक उनको शमशान घाट ले जाया गया, उनके साथ मौजूद थे. उनके एम्बुलेंस में भी थे, और जहां पोस्टमार्टम हुआ कूपर हॉस्पिटल में, वहां पे भी मौजूद थे.
तो जो इनके दावे हैं, जो इनका कहना है, इनकी ज़बानी हम सुनेंगे कि आखिर क्या कुछ इन्होंने देखा और ये जो खुलासा करने जा रहे हैं उस बारे में इनको क्या कहना है। आप बताइए कितने बजे की ये बात है, क्या हुआ था जब सबसे पहले एम्बुलेंस यहाँ पहुंची, उसके बाद कब तक आप सुशांत की जब बॉडी थी उसके साथ थे? सुशांत की बॉडी शाम में जो 5 बजे से आई थी, मैं जब कूपर हॉस्पिटल में पहुंचा था, बैंड्रा से वो एम्बुलेंस वाला लेके आया था, बड़े हॉस्पिटल में रखे थे, सीरियस रूम में उसको सब चेक कर रहे थे। उसके बाद सब कुछ हुआ, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जब उसको पोस्टमार्टम की तरफ लेके आए, जब मैं बॉडी देखा, अंदर जाके अपने मामा लोग थोड़े पहचाना लेते, अंदर जाके मैंने देखा। फिर जब उसका 11:30 बजे वो पोस्टमार्टम हुआ, रात में जो 11:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ, फिर 11:30 बजे पोस्टमार्टम होने के बाद हम निकल गए। जब आपने बॉडी देखी तब आपने क्या देखा था वहाँ पे? क्या सुशांत की बॉडी पे कोई निशान थे? क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप बॉडी देखते रहे हैं, बॉडी उठाते रहे हैं, ऐसा है कि आपने बॉडियाँ उठाई हैं पहले भी? पहले बॉडी उठाई है। तो जब आपने बॉडी देखी जाके तो उसमें क्या देखा? क्या उनके शरीर पे कोई निशान थे? क्या चोट थी? क्या कोई हाथ पैर में चोट थी? उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि पैर की हड्डी टूटी थी? सर, जो फांसी लेगा तो पैर आड़ा टूड़ा मारेगा, तो पैर की हड्डी कैसा टूटेगी? नहीं, आपको कैसे पता लगा कि पैर की हड्डी टूटी हुई है? पैर एक मोटा है और एक पतला है। क्या वो पहले से नंगड़े थे? पहले से गाइज, द ब्रोकन लेग वी डिड सी इट बहुत अच्छे से। जो हमने लास्ट रूम के अंदर, माउंट ब्लैंक में रूम के अंदर 2 बॉडीज वाली पे जब हमने बात करी थी, तो we did go ahead and see the broken leg, the disfigured knee, and the twisted ankle as well. So he's most probably talking about that. Let's proceed further. तो nervous थे नहीं, वो पहले से अच्छे थे। उनकी पैर की हड्डी टूटी थी और दूसरी बात यहाँ पे निशाने थे सीओ के। किस चीज के निशान थे यहाँ? सीओ के, जैसे एक मोटी सुई रहती है, इतनी मोटी रहती है, वो पतली रहती है, वो छुपाओगे तो निशान आएंगे, बरोबर? वो निशान होते। और यहाँ पे कुछ टेप चिपका था। पोस्टमार्टम के बाद मैंने जब उसको टेप निकाला था, देखा था, जब उसको कुछ तेल वेल से हिला रहे थे, जब भी मैंने देखा था। बस यही था। यहाँ पे निशान थे गले पे, बस पैर की हड्डी टूटी हुई थी। और भी कहीं कोई निशान? तलवे के नीचे सुइयों के निशान थे। तलवे के नीचे सुई चुभाने के निशान थे। So people, I'd just like to go ahead and clarify one thing. जो इसने बोला तलवे के नीचे सुई चुभाने वाले निशान, like the sole of your foot happens to be the most sensitive part of your body. It could be one of the most gruesome tortures of going ahead and ensuring that the pins are being penetrated in the foot of your sole. And that is something which could be, I mean, the pain could be beyond imagination is what I feel. And that's what he had gone through. Otherwise, why would this person go ahead and risk his life himself and come out and say this? अगर आज की डेट में हम इस इंसान के बारे में, इस पर्टिकुलर विटनेस के बारे में, या फिर दिस पर्सन हु वेंट अहेड एंड स्प्यूड आउट ऑल दीज डिटेल्स पता करने की कोशिश करते हैं, तो वी डोंट गेट टू फाइंड एनीथिंग। वी डू नॉट। We don't know where he is. I hope the agencies do. I hope they do. Because this guy has given a clincher. He's the one who has seen the body firsthand. He's the one who has heard the doctors saying it was a murder. Let him speak. Let's see what else he has to say. और बॉडी कैसे आप कह सकते हैं कि जैसा आपने हमें बताया था कि आत्महत्या नहीं या सुसाइड नहीं, ये मर्डर था, तो ऐसा कैसे पता लग जाता है कि आप लोग? सुसाइड करेगा तो आदमी जबान बाहर आएगी, बाथरूम निकल जाएगी, पेशाब आएगी, ना कुछ गिल्ला था ना कुछ था, तो सूखा ही था ना। आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो बैंड्रा पुलिस वाले लोग को भी जाके आप पूछिए। सर, बैंड्रा पुलिस वाले आप क्या कर रहे थे देखना तो चाहिए था। उनको तो थोड़ा पूछिए। मैं तो जो देखा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, कि मैं झूठ तो बोल रहा नहीं। कि डॉक्टर्स वहाँ पे क्या बोल रहे थे? डॉक्टर लोग का नाम मेरे को नहीं मालूम। डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम, खाली डॉक्टर लोग से यही सुन में मैं सुन रहा था कि मर्डर है बस।
अच्छा, डॉक्टर ये बोल रहे हाँ मर्डर है। थे। पुलिस वाले क्या डॉक्टरों से कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले लोग कब जा रहे थे, डॉक्टर लोग से बात कर रहे थे, वो हमारे सामने बात नहीं कर पा रहे। ऐसा है, हमारे से सामने बात कुछ नहीं करे जा रहे थे। फिर सुबह जो रेखा चतुर्वेदी आई थी, रेखा चतुर्वेदी जी जो आई थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड आई है, वो आई थी 25 मिनट तक वो अंदर थी, मैं उसके साथ था। इसका टाइम याद रखना, 25 मिनट्स तक शी वाज इनसाइड, ओके, 25 मिनट्स, और ये भी था साथ में। लेट्स प्रोसीड। जब वो माफी भी मांगी थी, क्या बोल रही थी? सॉरी सुशांत सॉरी, और रो रो के सॉरी बोल रही थी बस। अच्छा, और कौन था उस समय मौजूद? उसके साथ एक लंबे बाल घुंघरू बाल वाला एक आदमी था, और एक कोई आदमी छोटे बाल और टी शर्ट पहना था, वो था। अच्छा, कैसे रंग के कपड़े पहने थे, कुछ ध्यान है आपको? वो चेस वाला शर्ट पहने थे, जीन्स पहने थे बस। So he has basically gone ahead and kind of agreed with the theory of Surjit Singh Rathore, what he has told. Ideally, this guy gave the testimony first and then Surjit Singh Rathore came. So this guy knows that Surjit Singh Rathore was inside along with Riya. रिया ने सॉरी बोला, सुरजीत की भी सेम चीज़ है बोलने वाली। उसके बाद सुरजीत का ये भी कहना था कि 25-30 मिनट, सुरजीत का आई गेस 40-45 मिनट्स कहना था, बट लेट्स सी, वी विल सी आगे जाके। लेट्स प्रोसीड। और दूसरा आदमी जो था वो कैसे पहना था? वो टी शर्ट पहना था और जीन्स पहना था, व्हाइट कलर की टी शर्ट थी और जीन्स। व्हाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स वाला पीपल, इफ यू रिमेंबर सूरज सिंह हमने अभी देखा था, ही वाज वेयरिंग द व्हाइट टी शर्ट एंड द जीन्स। सो अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद कितनी देर तक अंदर रहे, क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी, वो आदमी मेरे को बोला बाहर चले जाइए आप, हम लोग आ रहे। वो बस 25 मिनट के बाद बाहर आई, बस हम लोग भी वहाँ खड़े थे उसकी गाड़ी के बस, मैं उसको देखा बस। उसके बाद तो क्या आपने बताया कि आप शमशान घाट तक उस गाड़ी में थे? शमशान घाट तक था, जब सब कुछ हो गया 4 बजे, जब शमशान घाट उसको लेके गए थे यहाँ से कूपर अस्पताल? ऊपर हॉस्पिटल से 4-4:30 बजे शमशान घाट लेके गए थे। शमशान घाट में जब उसको जलाए, पूरा तक लास्ट तक महे तक उसके जीजा जी, उसके जितने दोस्त लोग, जैसे बहुत जन हीरो लोग भी आए थे, उनको एंट्री नहीं दी थी। बहुत पुलिस खड़ी थी, बहुत पुलिस खड़ी थी, बैंड्रा वाली जू पुलिस स्टेशन भी खड़ी थी। ऐसा कि नहीं, जू पुलिस स्टेशन का कुछ लेना देना है नहीं उसमें। बस बैंड्रा पुलिस को यही चाहता हूँ कि आप कुछ सच का बवाला निकालिए और डॉक्टर लोग से कुछ बवाला निकालिए। लेकिन आप मुझे एक बात बैंड्रा पुलिस क्या निकलवाएगी, उन्हीं का करा धरा तो है सारा। बताइए, आपने कहा कि आपको अंदाजा हुआ क्योंकि आप बॉडी उठाते रहते हैं, आपने कई बार लाशें उठाई हैं या बॉडीज उठाई हैं, उससे आपको पता लगा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर केस है, और डॉक्टर भी ये कहते हैं। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ एक बार, जब मैं बॉडी उठाता हूँ, जब हमको मालूम पड़ जाता है कोई भी फांसी लेगा तो जबान बाहर आएगी, पेशाब होगी, बाथरूम होगी। तुमको कैसा मालूम फांसी लिया है? फांसी लेगा तो बाथरूम होगी, पेशाब होगी। तो आपने एक ये बोला था कि आप जो बता रहे थे अभी मुझसे कि बॉडी वाइट हो जाती है, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, वो क्या होता है? फांसी लेगा तो येलो बॉडी नहीं होती, वाइट ही वाइट बॉडी, और हाथ ऐसे हो जाएगी, टांग नहीं टूटेगी। Okay, do we have a doctor in here? Is it a thing that if it's death by hanging, then the body would turn white and not yellow? Do we have world peace today? I don't know. If anyone's there who's a doctor and can confirm this, would be great, yeah. बस Lisa, if we have you, would be great. अच्छा, तो आपका दावा ये है कि आप वहाँ मौजूद थे और डॉक्टरों ने भी ये बात बोली कि ये मर्डर है, आपने देखा कि सुशांत के शरीर पे निशान थे? जी, डॉक्टर लोग एकदम दूर दूर से बोल रहे थे, हम कान से सुन रहे थे, हम आपको बोल रहे। डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम, डॉक्टर लोग का एड्रेस नहीं मालूम, बस डॉक्टर लोग जो बात कर रहे थे हम सुन रहे थे, एकदम कान लगा के हम सुन रहे थे। बस हमको इतना ही मालूम है, जो सच है हम सच बोल रहे, झूठ तो कुछ नहीं। मैं इतना पलट रहा हूँ ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, खाली मेरे को इतना है कि डर एक है, डर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। आप किस चीज से डर रहे हैं? ये चीज से डर रहा हूँ कि कभी बैंड्रा वाली पुलिस आ जाएगी, बैंड्रा वाली पुलिस आएगी, बेटा क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा, इस वजह से मैं डर रहा हूँ। कभी मेरी फैमिली पे, मैं तो एक गरीब बच्चा हूँ, कभी मेरी फैमिली पे कुछ हो जाए, ऐसा डर रहा हूँ। तो देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, और इन्होंने बातचीत में जो खुलासा करा वो ये करा है कि ये उस समय मौजूद थे वहाँ पे, ये बॉडी उठाने का काम करते हैं।
Well, I am not sure, Bhaswati ji, if CBI has taken. Okay, people, I apologize. There was some issue and I got पूरा blackout हो गया. But I hope I'm back. एक बार बता दो if you guys can see me. Okay, apologies for this. Now, this particular person whom we are talking about, I really hope that CBI has taken the testimony of this guy. All right. Not just this. There's one more thing that I'd like to share. And let me go ahead and show you that क्योंकि ये बहुत important चीज़ आई थी 14 जून से related है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे which is to the last thing. एक सेकेंड सुरजीत सिंह राठौर पे हम आगे आते हैं बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी ओके I'll tell you verbally क्योंकि ये पॉइंट आई wanted to keep further. Do you guys know that there was another testimony made by a particular guy who mentioned कि एम्बुलेंस वाला ही बंदा था जिसने बोला था कि सबसे पहले वहां पे पुलिस आई सबसे पहले उस रूम के अंदर पुलिस आई एंड कोई कपड़ा वपड़ा उस टाइम कुछ भी नहीं था हमने वो जो 3 एडिट वाले पार्ट की वीडियो देखी जो बाहर आई जिसमें मीतू दी भी पार्ट है 3rd एडिट में राइट उसमें बहुत क्लियरली एक चीज दिखी है कि पहले कपड़ा नीचे रखा रहता है बेड पे सेकंड वाले एडिट में हमने देखा कि जो बेड के नीचे एक बेडशीट के अंदर वो चाहे बॉडी हो चाहे एविडेंस हो वो जो भी चीज थी वो डाल दी जाती है कबर्ड में उसकी बेडशीट आ जाती है बेड पे और सेकंड एडिट में कपड़ा जाके लटक जाता है ऊपर क्योंकि थर्ड एडिट में मीतू दी को अंदर आना है और कपड़ा लटका है ऊपर नीचे से गायब है सो दिस अगेन raises a lot of questions जहां पे उस पर्टिकुलर बंदे ने अपनी टेस्टिमनी में बोला था कि मुंबई पुलिस entered first and out of the blue they started uploading pictures on Facebook. ये टेस्टिमनी आई थी I was trying to find that video. For some reason, I couldn't. But again, this testimony was there that it was Mumbai police who started uploading videos and photos through Facebook, जो morphed वाली थी. The morphed pictures, not the real ones. The morphed pictures and this edited video which shows मीतू दी's presence, so that लोगों को ये शांति हो जाए मन में कि मीतू दी थी वहां पे तो कुछ गलत नहीं हुआ होगा. But we got it all. We got to know. हमें पता चल गया कि क्या हुआ है. हमने वो वीडियो ध्यान से देखी चाहे उसमें समय लगा चाहे उसमें साल 1.5 साल लगे but now we know what exactly happened and now we can simply raise it as a question to agency कि हमें पता है कि ये 3 edits हैं this is the breakdown अब आप बताओ इसका आंसर क्या है या इसका रिस्पॉन्स क्या है या फिर the testimony which we just saw right now from this particular person from Cooper where is he या इस टेस्टिमनी का रिवर्ट क्या है व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर टेस्टिमनी यू वुड नेवर नो दे वुड नॉट हैव एन आंसर दे वुड जस्ट हैव वन बना बनाया आंसर फॉर यू दैट we are still looking at every angle of this particular case none of the angles have been ruled out blah 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 same चीज जो सीबीआई पिछले 1.5 साल से हमें मक्खन के ऊपर ऐसे लगा के देता जा रहा है और हमें ओह सीबीआई का अपडेट हम खा रहे हैं और अभी और जब भी हम एक और पैटर्न है लोग मेरे को इसके लिए बुरा बोल सकते हैं
but I would love to be blunt enough, and I've always been blunt about it from the beginning, that जब भी हम सीबीआई के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना इस चीज पे और याद करना सारे हैपनिंग्स, जब भी हम सीबीआई के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक प्रोटेस्ट करके हो, चाहे वो एक डिजिटल कैंपेन चला के हो, एनसीबी कुछ ना कुछ, सी अगेन नॉट डिफेमिंग अ पर्टिकुलर ऑफिसर, बट एनसीबी कुछ ना कुछ छोटा मोटा उठा के एज अ बिस्किट हमारे सामने फेंक देता है कि ये देखो जी हमने इसको पकड़ लिया, और हम हो जाते हैं खुश, अरे पकड़ लिया, देखो देखो देखो, इनडायरेक्टली जस्टिस मिल रहा है ना यार, क्या है देखो यार, इन लोग इन्वॉल्व है ना, इनडायरेक्टली जस्टिस मिल रहा है ना, पिठानी को भी तो इनडायरेक्ट जस्टिस मिल रहा है, बैठा है जेल के अंदर, बट वी नो कि हमें उसके अरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज अरेस्टेड फॉर समथिंग एल्स, इन द ड्रग्स वाला थिंग। मर्डर का क्या, हम बस अपने मन को यही मनाते रहेंगे कि एक इनडायरेक्ट वे ऑफ जस्टिस है, ये डिवाइन जस्टिस है, इसलिए पिठानी फंस गया जेल के अंदर। तुम्हें क्या पता जेल के अंदर क्या कर रहा है वो तो गया ड्रग्स के कंजम्पशन या फिर प्रोक्योरमेंट के चार्जेस पे, वो तो मजे कर रहा होगा। अगर मर्डर के उसमें अंदर जाता ना, उसकी जो सुताई होती ना अंदर, बट हम हैं सीधे साधे से, हमें आके बिस्किट फेंक देते हैं। याद करो, एक एक इंस्टेंस याद करो, जब जब आपने सीबीआई पे प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, एनसीबी हैज कम आउट विद समथिंग और द अदर। माय क्वेश्चन इज व्हाई? ठीक है, एनसीबी कर रही है, एनसीबी इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर डूइंग रियली ग्रेट, बट व्हाट इज, मतलब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? एनसीबी कर रही है तो लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, और फिर लोग खुद कंप्लेन करते हैं कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस बन के रह गया है। लोग इसे बस सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस कहते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही सिंगल एजेंडा फोकस रह गया है, एनसीबी एनसीबी एनसीबी, ड्रग की रेड्स, एनसीबी ड्रग की रेड्स, पिठानी, रिया चक्रवर्ती की बेल एंड व्हाट नॉट। वेयर सीबीआई, वेयर इज ईडी, कहां है सुवेद लोहिया, कहां है बंटी सिसदे? अर्चना थर्ड डिग्री इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर वो होमिसाइड के लिए भी अंदर जाएगा ना तो भी उसको थर्ड डिग्री नहीं मिलेगा। थर्ड डिग्री वो तभी मिलेगा व्हेन ही गोज इन फॉर अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बट हम हैं, यू नो, कौन सी ब्रीड है पता नहीं, लैब्राडोर है कि क्या है, कि रॉटवाइलर है, जो बिस्किट मिलते ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ तो हो रहा है। एनसीबी कर रही है तो सीबीआई और ईडी भी कर ही रहे होंगे। कहाँ कर रहे हैं, कोई बताए? और फिर कोई बोले कि आप ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी से क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो? क्यों नहीं उठाएं? कहां हैं आंसर्स? एग्जैक्टली शारदा जी, आई कॉल इट अ लॉलीपॉप। मर्डर केस में ब्रजेश भाई आप कह रहे हो भाई हमें तो मर्डर केस में कातिलों को सजा दिलवाना है। सर हमें यही नहीं मालूम कि वो मर्डर केस अभी तक ऐड भी हुआ है या नहीं। अभी तो हम 307 ही लेके चल, 306, वो जो जो 306 आई गेस और 307, हम उसी को लेके चल रहे हैं ना। वेयर इज 302? और कब तक हम एजेंसी के सामने ऐसे हाथ वो करके बैठे रहे कि हाँ जी सेंटर की एजेंसी है, नहीं कुछ मत बोलना? अबे देश बेच के खा रहे हैं लोग, अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे? जिया खान के केस में पता नहीं है राबिया जी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने तो ओपनली आके बोल दिया ना कि सीबीआई ने बोल दिया है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इसके पीछे हमारे ड्राइवर का हाथ है। You want the same day to are you all waiting for the same day to be coming over this particular case? कि कोई आके ऐसा बोल दे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। Yeah, exactly, Sonia. We shouldn't be begging for justice. We should be in rage, demanding it, not begging for it. It's our right. He was a public figure and he deserves this. कब तक हम एनसीबी के फेंके हुए बिस्किट्स पे खुश होंगे यार? मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं अगेन,
बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि प्लीज आप ड्रग केस को ये मत बोल के लोगों को पागल बनाओ कि यार जस्टिस मिल रहा है, देखा देखा जस्टिस मिल रहा है, देखा देखा एनसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब मोदी जी को सब पता है, मोदी जी को सब पता है, तो कहाँ है सीबीआई? हम बस जनता को दिलासे दिए जा रहे हैं जस्ट सो दैट कि आई टॉक अबाउट ऑल यूट्यूबर्स इज वेल। हम सिर्फ जनता को इस बात के दिलासे दे रहे हैं कि डोंट वरी हो रहा है ना। क्यों पता है? क्योंकि जनता रुके और हमें देखे, और हम फिर से आपको एनसीबी के फेंके हुए बिस्किट्स पे लाके कंटेंट बना के देते जाते हैं, और जनता देखते जाती है कि ओ माय गॉड यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस बॉय। और जहां पे मर्डर की बात करो, मर्डर एंगल की बात करो, तब बोलते हो कि यार ये क्या रिपीट कर रहा है, ये तो रिपीटेड है, कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हमने देखा है। क्यों? ड्रग एंगल में इतना इंटरेस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस खुद बना रखा है, और फिर करते हैं ये ब्लेम सबको, मीडिया को या फिर एजेंसीज को। क्यों भाई? ड्रग केस से क्या लेना देना है? ड्रग कुड बी वन ऑफ द एक्सेसरी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटायर केस जिस पे हम बैठ के खुश हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी अंदर है तो ही इज हैविंग अ गुड टाइम। आई डोंट थिंक कोई ये किसी भी फॉर्म में जस्टिस है जस्ट बिकॉज वो चार दीवारी के अंदर है। जेल के अंदर जाके देखो सब होता है, और किस लेवल पे होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और जिस पावर का सपोर्ट लेके वो अंदर बैठा है ना, वो क्या कर रहा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इट्स रिया ड्रग केस, आई अंडरस्टैंड सुरभि, बट हमने सबने इससे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस बना दिया है, क्योंकि all we have been talking about for the last 6 months is NCB, Aryan Khan, Nawab Malik, NCB, Aryan Khan, Nawab Malik, NCB, Aryan Khan, Nawab Malik. एनसीबी, आर्यन खान और नवाब मलिक पे कितने लोगों ने अपनी रोटियां सेक ली है। सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान मर्डर पे जब बात करने जाओ तो लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं कि क्या रिपीट पक गए, क्या कर रहे हो। ऐसे लोग डिजर्व भी नहीं करते ऐसे कैंपेन में रहना, जो मर्डर के लिए ना बात करके छोटे छोटे लॉलीपॉप्स या बिस्किट्स के साथ खुश है। एंड दे आर विनिंग, दीज पीपल दे आर विनिंग। सारी चीजें डाइवर्ट कर दी ड्रग की तरफ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आ गए ना। ओ माय गॉड, देखो दीपिका क्या आप ड्रग लेती हैं, रणवीर क्या आप ड्रग लेते हैं, बस यही चल रहा है। सुशांत और दिशा को मार दिया, उसकी बात कौन करेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। एक हम लास्ट इंसान की तरफ चलते हैं जो इस सेशन में हम कवर करेंगे, विच इज सुरजीत सिंह राठौर। अ वेरी शेडी कैरेक्टर। एक सेकेंड। Okay. I'll just share this article with you. तो guys, मैंने अभी जितना भी बोला है ना, please don't take it in an offensive manner. I really want each and every one of you to please get serious about the murder case and stop being happy with NCB. ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इससे कुछ नहीं हाथ आने वाला। एंड जितने भी लोग ये सेशन बाद में देखेंगे, प्लीज आस्क योर पीयर्स, शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। आप कमेंट्स छोड़िए ताकि दूसरों के रिकमेंडेशंस में जाए, ताकि दूसरे लोगों तक ये बात पहुंच जाए। इसीलिए नहीं कि हमारे चैनल की व्यूअरशिप बढ़े। अगर वो हमारा एजेंडा होता तो हम अपने चैनल का नाम या तो रखते रजत एंड भारत एसोसिएट्स या R&B या B&R या व्हाटएवर। वी वुडंट हैव केप्ट इट जस्टिस फॉर SSR। अगर आप कह रहे हो कि आप जस्टिस फॉर SSR के लिए हो तो एटलीस्ट उसको मीन तो करो यार। आर्यन खान, नवाब मलिक और एनसीबी के नाम पे रोटी तोड़े जा रहे हैं। मर्डर की तो बात कर लो यार। आज क्या हो रहा है उससे प्रॉब्लम है, 1.5 साल पहली चीज तो सॉल्व कर ही नहीं गई।
आज क्या हो रहा है तुम्हें वो जानना है, कुछ नया जानना है। 1.5 साल पुरानी चीज तो वैसी की वैसी रखी है, तुम नया जान के क्या कर लोगे या क्या उखाड़ लोगे? पार्डन माई फ्रेंच, बट दिस इज माई फ्रस्ट्रेशन स्पीकिंग। एंड आई एम श्योर सुशांत और दिशा अगर ये देख रहे होंगे, जोशी यार, आई एम सॉरी, आई वाज इन द मिडल। आई नो यू वर टॉकिंग अबाउट एन उदय सिंह गौरी का मैसेज। आई हैव read it a couple of times. I'm so sorry I couldn't revert, but you were saying that some bad words were being said, could have been said by Uday Singh Gauri. I agree, could be a possibility. Okay, so coming back to कि सुशांत और दिशा अगर आज देख रहे होंगे ना, they would be disappointed in us. हम मर्डर की बात करते करते कहाँ इसको एक ड्रग एंगल की तरफ ले गए। और ये सबसे सबसे बड़ा डाइवर्जन तो यही है इस केस का, जो हमने बनने दिया है। आई एम हैप्पी कि ये हो रहा है, आई एम हैप्पी कि बॉलीवुड इज एक्सपोज नाउ, बट व्हाट अबाउट दोज 2 murders? Who's going to be accountable for them? CBI is highly questionable. CBI needs to answer. And I'm telling you people, I don't know दिल्ली में कितने लोग हैं यहाँ पे, मेरा बहुत जोर से मन है एक जाके CBI के सामने प्रोटेस्ट करने का। अगर कोई साथ देना चाहता है और अगर if someone is ready, let's do this. Contact me, let's do this. दिल्ली वालों, मैं रेडी हूँ चलने के लिए। या फिर अगर ज्यादा हुआ, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाके वो लेके खड़े हो जाऊंगा वहां पे। बट दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। सॉरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई विल टेक यू गाइस टू एन आर्टिकल। ओके, देयर वी गो। इन सब के बीच में एक उड़ते उड़ते आते हैं सुरजीत सिंह राठौर। ठीक है, I'm ready to share everything I know with CBI. Witness to Sushant's body in mortuary. So, Sushant, the first thing that put me in doubts about this particular guy is the fact that here this particular person states that I am ready to go to CBI, but CBI did not call him. He was just an accessory witness, like who wanted to volunteer and go ahead and tell things. He exactly had stated the same things as that particular driver did. We all know that Riya Chakravarti was there, 45 minutes ka wo tha, and she said, I am sorry babu. Rather than reading the article, let me make it easy for you. Let me just quickly go ahead and share his testimony video. Hello Anil sir, welcome. It's good seeing you. Thank you. Okay, चलो हम इसकी वीडियो ही दिखा देते हैं। सुरजीत सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरजीत सिंह राठौर वो शख्स हैं जो 15 जून को कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में तब मौजूद थे जब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची थी। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती को यही वो शख्स हैं जो वहां पर उस मॉर्चरी में लेके गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के शव को देखना चाहती थी रिया चक्रवर्ती और राठौर साहब भी लेके गए थे। उनसे जानते हैं कि वहां पर हुआ क्या था और ये वहां पे कैसे पहुंचे थे। राठौर साहब, ये बताइए कि आप वहां पर कूपर हॉस्पिटल में 15 जून को क्यों पहुंचे, किसके साथ पहुंचे थे आप? जी, मैं 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल गया था। मैं अकेला गया था, मेरा ड्राइवर साथ था और मेरा स्क्वाड बॉय था, ये मुनीर मेरे साथ ही था। मेरे पास फ़ोन आया था 14 तारीख को, हमारे करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मुझे कॉल आया और जैसे ही पता चला हम सबको कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला। जैसे पता चला उनका मुझे कॉल किया कि सुरजीत ये क्या हो गया इंडस्ट्री में, सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा है सुसाइड किया। तो बोला नहीं, आप वो राजपूत है और आपको जाना है वहाँ पे उनके अंतिम यात्रा में। मैं कहा ठीक है, मैं जाऊँगा। तो मैं सुबह 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में गया और कूपर हॉस्पिटल जब मैं गया तो वहाँ पे कोई नहीं थे, मतलब सिर्फ वो बॉडी रखी हुई थी। न्यूज़ वाले वहाँ थे और पुलिस वाले लोग थे। मैं गया तो पुलिस वालों ने मुझे पूछा था, बोला सर आप क्या सुशांत के रिलेटिव हो क्या? मैं कहा नहीं,
तो कुछ लोग मुझे जानते भी थे करडी सेना के माध्यम से और फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक आप साइड में खड़े हो जाइए। तो मैं जाके साइड में बैठ गया था। आधा पौन घंटा होने के बाद में सूरज सिंह जी जो हैं धोनी एंटरटेनमेंट के, वो वहाँ पे आए थे। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे पहचान गए और मेरे पास आके बोले कि सुरजीत सिंह जी, मैं सूरज सिंह हूँ और आप करडी सेना के हो। तो हमारी मुलाकात हुई। मेरी पहली मुलाकात हुई सूरज सिंह जी से हुई। तो सूरज सिंह जी ने मुझे कहा कि यार सुरजीत भाई, रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आना चाहती है। तो मैंने कहा भाई रिया चक्रवर्ती जब आना चाहती है तो आने दीजिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बोला मीडिया लो है तो क्या होना। तो बोला पीछे से आएगी, लेकिन वो सुशांत का शव की वो मतलब अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो मैंने कहा अंतिम दर्शन तो वहाँ पवन हंस में जब हम सब लोग चलेंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, तो सब लोग वहीं आ रहे हैं, सेलिब्रिटी लोग, मुझे पता चला है। बोला नहीं वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसकी सुशांत की फैमिली वाले उन आने नहीं देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जो मोर्चरी वाले थे, मैंने उनसे बात की और जो पुलिस का जो वहाँ पे लोग थे उनसे मैंने पूछा कि भैया रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, ये एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने बोला ठीक हम देखते हैं। तो फिर जो मोर्चरी वाले जो गार्ड था वो मेरे पास आया कि ठीक है आप और रिया दोनों चले जाइए और आप जल्दी जाके फटाक से आ जाइए, क्योंकि न्यूज़ वाले हैं, मीडिया वगैरह सब लोग हैं। तो मैं गया उसके साथ। मैं उसको रिया आगे चल रही थी और मैं इसके पीछे पीछे गया था। हम जाके वहाँ पे गाइज एक सेकंड के लिए पॉज किया है जस्ट ताकि आप लोग नोटिस करें जो वो कूपर के एम्प्लॉय का टेस्टिमनी इससे जस्ट पहले हमने देखा था, जिसने सारी चीज़ें बताई थी कि सुरजीत आया था घुंघराले बाल वाला, चेक शर्ट वाला। उसने सूरज सिंह के होने प्रेजेंस का भी बताया था कि सूरज सिंह वाज आल्सो इनसाइड अलोंग विद सुरजीत सिंह, द वाइट शर्ट एंड द ब्लू जींस, वाइट टी शर्ट एंड द ब्लू जींस वाला गाय। बट यहाँ अगर आप देखोगे तो सुरजीत सिंह ने सूरज सिंह को छुपाया। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। वो सामने जो मोर्चरी के अंदर जो लड़का रहता है वो बॉडी लेके आया, उस पे थी चेयर पे। और फिर मैंने उसका पर्दा हटाया, सुशांत के जो चेहरे वाला था मैंने हटाया। हटाते ही मैंने देखा तो मतलब मुझे नहीं लगा कि उसने सुसाइड किया है, और मुझे देखना भी था क्योंकि सुसाइड किया है क्या। तो मैं अंदर भी गया। तो जैसे मैंने देखा, हटाया, और रिया पास में खड़ी थी और मैंने देखा कि यार ये सुसाइड करता तो फंदा तो यहाँ से लगता है। सुशांत के यहाँ से ये टूटा हुआ था और रस्सी से इस तरह से उसको खस के मतलब गला दबाया है कि मतलब मैं खुद, मेरे आंसू आने लगे उसको देख के। मतलब चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही जो हमेशा स्क्रीन में हम देखते रहते हैं वैसे चेहरा था। रिया पास में खड़ी और रिया कहती है चेस्ट पे हार के सॉरी बाबू। तो मुझे एक बार क्यों पहले ही हुआ था कि वहाँ मुझे बताया था सूरज सिंह ने कि सुशांत की फैमिली उसको आना नहीं देती, वो नहीं चाहती कि रिया यहाँ पे आए। उसके बाद में ये जब वो सॉरी बाबू बोला उसने, रिया ने, तो मुझे लगा यार सॉरी क्यों बोल रही है यहाँ पे। तब क्या मोर्चरी के अंदर रिया आपके साथ थी और उसने सुशांत के शव पे हाथ रखा? सॉरी उसने बोला सॉरी बाबू, चेस्ट पे बोला सॉरी बाबू। तो मुझे लगा यार सॉरी क्यों बोल रही है। फिर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, मैंने ठीक है सॉरी बोला है, लेकिन मैंने उसको मेरे दिमाग में रखा सॉरी वर्ड को। फिर मैंने कहा चलो उसकी मैं भी पैरों में हाथ लेकर उसको नमन तो किया जाए। फिर मैंने उसके पैर हटाए, पैर का जो पर्दा हटा के मैंने नमन किया और फिर हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद में और वहाँ पे रिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं बोला उसने, बस चुपचाप वो बाहर आ गए। आने के बाद अच्छा, according to the helper who gave the testimony, he said रिया और ये 25 मिनट तक अंदर थे। बट अकॉर्डिंग टू हिम, इसकी टेस्टिमनी में इन लोग बस नमन किए। इसने पैर के जब पर्दा भी हटाया तो इसे टूटा हुआ पैर नहीं दिखा। इसने पैर पड़े और ये लोग बाहर आ गए। लेट्स प्रोसीड। में हमने रिया के चेहरे पे कोई ऐसा दुख आपने देखा हो कि क्योंकि सुशांत लगा रखी थी दुख का, तो मैं क्या बताऊं कि गर्लफ्रेंड रही है तो दुख भी होगा, वो तो है ही। आंखों में आंसू या कुछ इस तरीके से? ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। वो मास्क पहन रखा था और दुपट्टा भी पहन रखा था उसने, और मैं तो पकड़ के लेके गया। सब वो होने के बाद हम बाहर आए। आने के बाद उसने कहा
मम्मी भी जाना चाहती है, भाई भी जाना चाहता है, तो मोर्चरी वाले ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप 2 ही गए, ठीक है, नहीं ज़्यादा अलाउड नहीं है। जाने के बाद में रिया चली गई, मैं वहाँ रुका और सूरज सिंह जी भी रुके हुए थे। बारिश बहुत तेज़ थी और मेरी गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो मैं सोचा बारिश कम होने के बाद मैं चला जाऊँगा यार, अभी थोड़ा टाइम है कि 3:30-4 बजे के आसपास पवन हंस में बॉडी जाने वाली थी। थोड़ी सी देर बाद में वहाँ पे संदीप सिंह आता है। मैंने पहली बार संदीप सिंह को वहाँ पे देखा था। वो आता है अपने 3-4 दोस्तों के साथ आता है, मतलब इस तरह का आता है कि सारा चार्ज उसी के हाथ में था। पेपर भी लेके आता है, बीएमसी के पेपर लेके आता है, पोस्टमार्टम का सारा पता नहीं किस पेपर लेके आता है। वो जब आया था तो हम वहाँ खड़े थे, तो मैं सूरज सिंह खड़े थे, तो मैंने सूरज सिंह को पूछा कि कौन है, बोला सुशांत का दोस्त है और साथ में रहते थे ये। मैंने कहा चलो ठीक है। और संदीप सिंह को मेरे बारे में उन्होंने सूरज सिंह ने बताया, बोला सुरजीत सिंह राठौड़ हैं, प्रोड्यूसर हैं और करनी सेना के पदाधिकारी हैं। तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। ये सुन के बंदा भाग गया, वापस चला गया। चला जाने के बाद में वो वापस आता है, एम्बुलेंस लेके आता है, एक बड़ी एम्बुलेंस लेके आया, आके वहाँ खड़ा रहता है, इधर उधर फ़ोन की करना रहता है, वापस आना उसका लगा रहता है। आधे पौन घंटे बाद में 3 स्टार ऑफिसर आता है। जैसे ऑफिसर आता, मैं ऐसे सामने बैठा था कुपे हॉस्पिटल में, वहाँ पे मोर्चरी हाउस में, तो मैंने उनको नमस्कार भी किया, तो उन्होंने मेरे को नमस्कार किया और हम वो प्रक्रिया चल रही थी, डॉक्यूमेंट कार्रवाई की यार दोस्त सब कर रहे थे, सब मोर्चरी में रखा हुआ था। अब ये था कि अभी उसको निकाल के जाना ही है हमें सब एम्बुलेंस में लेके। उसके बाद मैं वहाँ खड़ा था। अब उसने ऑफिसर को पहले सिखा के आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। रुकने के बाद हम खड़े थे, बातचीत में मेरे फ़ोन पे बात कर रहा था कि मेरे यार दोस्त करनी सेना पदाधिकारियों को कॉल वगैरह आ रहे थे उस टाइम। दुबई के बारे में क्या बातचीत है? ये कह रहा कि दुबई से फ़ोन आया था रात को, ये बात इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं। तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से, इनको यहाँ मत रखिए, ऐसा इशारा किया। तो ऑफिसर मुझे कहता है कि आप कौन हैं? मैंने कहा कौन मतलब, आप अभी ये आपको इशारा कर, आप बोलो कौन है? तो मैं सर मैं करनी सेना पदाधिकारी हूँ। अब सूरज सिंह जी पूछिए। सूरज सिंह ने बताया कि करनी सेना पदाधिकारी नीरज सिंह जी से इनकी बात हुई, उनको बात होने के बाद ये आए हैं और हम तो राजपूत है, या मेरा भाई राजपूत है जो उसकी डेथ हुई है, और करनी सेना तो आपको पता है। मेरे से बदतमीजी से बात की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से जाना अच्छा है। मैंने सोचा वहाँ यहाँ से अपन पवन हंस चलते, वहाँ जैसे अंतिम संस्कार होता है मैं उसकी फैमिली से भी मिल लूँगा, नीरज सिंह जी उनके फादर आए तो मैं सबसे मिल लूँगा। तो वहाँ पे जब मैं गया, क्या पता संदीप सिंह ने वहाँ पे मेरी गाड़ी के नंबर नोट किए हो या मुझे देख के बोल दे भाई फ़ोटो भेज दियो किसी लोगों को कि इनको अंदर मत आने देना। वहाँ पे मुझे पहले रोक लिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों जी? बोला लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मैंने कहा नाम नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो उनके ब्रदर से मेरी बात हुई है, करनी से ना कहूँ, मेरी गाड़ी के नेम प्लेट सब लिखा हुआ है, आप ऐसा मुझे जाने नहीं दे रहे। बोला नहीं नहीं आपको नहीं जाने देंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो वहाँ पे कुछ जू पुलिस स्टेशन के थे तो वो मुझे जानते थे, तो चक्रवर्ती मॉर्चरी में पहुंची थी तो उन्होंने ओके, आई होप दिस वर्ड हेल्प। आप लोगों का सबका टेक मैंने पढ़ लिया सुरजीत सिंह राठौर पे। सबका मानना है कि इट वाज अ डाइवर्जन टैक्टिक। आई ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट कि इट वाज अ डाइवर्जन टैक्टिक। कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ कहाँ हुई? एक तो हमने जो पहली टेस्टिमनी देखी विच वाज कूपर के हेल्पर की, उसकी टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग सुरजीत सिंह राठौर, रिया चक्रवर्ती एंड सूरज सिंह, all three of them came into the mortuary. They saw the body, सॉरी वॉरी हुआ, इसे बाहर जाने बोल दिया, एंड 25 मिनट तक दे वर इनसाइड। 25 मिनट्स। क्या हटा रहे थे बॉडी से, क्या कर रहे थे, नो आइडिया। या व्हाट वर दे डूइंग फॉर 25 मिनट्स, नो क्लू। ओके, सुरजीत सिंह राठौर ने बोला कि हमने सिर्फ चेहरा देखा, नमन किया, पैर छुए और बाहर आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन 1। कॉन्ट्रडिक्शन 2, माय बैड। 2 कॉन्ट्रडिक्शंस हो गई। एक तो सुरजीत सिंह ने बोला कि सूरज सिंह था ही नहीं, सिर्फ मैं और रिया थे, और they were there inside for 25 minutes. However, according to Surjit Singh Rathore, they were there inside for just a couple of minutes and they went out. आपको पता है आज की डेट में संदीप सिंह क्या कर रहा है?
अगर कोई मुझे चैट में बता दे, what is he doing these days? What is he up to? I guess people already know that he's trying to find his way into Bollywood and making his mark or setting up his base within the Bollywood. Biography by Sonia K. Sonia K. You say that he's working in some kind of biography. Okay, could be. But एक रुद्रबा making money films in lavish life. एक चीज दिखाना चाहता हूँ. इसके बाद आप सबका दिल जलेगा. आप सबका दिल जलेगा. मेरा भी जला. और हमने ये पहले एक बार शेयर भी किया हुआ है. तो आई वांट टू शो दिस टू यू पीपल कि व्हाट ही डज पोस्ट ये अगस्त सितंबर वाला सीन. ही ओपनड अ प्रोडक्शन हाउस. नाम पढ़ लो, मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा. इट सेज सुरजीत सिंह राठौर फिल्म प्रोड्यूसर. इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है SSR फिल्म्स प्रोडक्शन. ये हमारे सुरजीत सिंह राठौर है. आई एम श्योर SSR वो यूज कर रहा है सुरजीत सिंह राठौर का शॉर्ट, बट वी ऑल नो देयर इज ओनली वन SSR. Again, this is far reaching, but this person is enjoying his life. Big time. Big time. He is like, busy with shoots. He's busy with other things. Iska production house khul gaya hai. And specifically naming it SSR Film Productions, मेरे लिए तो एक मॉक है, एक टॉन्ट है कि हम तो ये सब करेंगे, तुमसे जो बन पड़े कर लो. The same attitude is being carried by Riya Chakravarti. She is posting her last 1 year का जितना भी जर्नी रहा है. ठीक है. The same thing, the same confidence is being portrayed by Siddharth Pithani because of the fact कि वो अंदर है. उसके बावजूद भी a girl agrees to marry him. जरूर कोई ना कोई फोरसाइट देखी होगी. जरूर कोई ना कोई गारंटी होगी कि कुछ नहीं होने वाला, बच जाएंगे. सो अगेन, कहां जा रहे हैं हम? इनके कॉन्फिडेंस के पीछे जो पावर है, जो सपोर्ट है, क्या हम एक्चुअली में उसके पीछे खड़े हो रहे हैं? या फिर हम समीर वानखेड़े आर्यन सिंह, समीर वानखेड़े आर्यन सिंह, समीर वानखेड़े एनसीबी आर्यन सिंह, नवाब मलिक, बस ये कर रहे हैं. ईडी के ऊपर ईडी से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? चलो सीबीआई से तो फिर भी लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं, नुपुर प्रसाद को टैग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. ईडी से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता कि जब आपने रजत मेवाती की, राज कुंद्रा की, जब आपने इस केस में बंटी सजदे की क्वेश्चनिंग करी, उसके बाद हुआ क्या? कहां गए वो 17 करोड़? जस्ट लाइक दिस, पुफ, हवा में. हो गया भाई, ईडी तो इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाने का दावा करते हैं और उन लोगों के प्रेशर की वजह से आज की डेट में सारी एजेंसीज चुप हैं. तो ये है हमारी एजेंसीज की, आई वोंट यूज द वर्ड, बट वेयर दे स्टैंड इज बिलो दीज पावरफुल पीपल. And if still agencies are not getting it, then we need to ensure that they hear us. सब रिस्क ले रहे हैं ना यार. इतने टाइम से केसेस चल रहे हैं, अभी तो और भी कितनी चीजें आ सकती थी जो मिट चुकी होंगी. एवरीथिंग इज गॉन. सारी चीजों में वी हैव फाउल प्ले. जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करने नहीं देती है. जब बिहार पुलिस को गाड़ी दी जाती है अंकिता लोखंडे की तरफ से, तो वो अपना ड्राइवर भी साथ भेजती है जस्ट टू कीप एन आई कि ये कहाँ जा रहे हैं. वो आएंगे लोखंडे पे, जब आएंगे वी विल डिस्कस दैट एज वेल. बट थिंक, डोंट बी हैप्पी बाय एनसीबी ड्रग्स
वो चलता रहेगा. दैट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वो आगे आने वाले 5 साल तक सफाई चलेगी. तो आप लोग के कहने का मतलब ये है कि पहले एनसीबी अपनी कर ले, फिर उसके 5 साल बाद हम सीबीआई के लिए जागेंगे और फिर सीबीआई से पूछेंगे कि सर अब तो बता दो 5 साल हो गए, कि हम तब फिर ईडी का वेट करेंगे, फिर हम ईडी के लिए इंतजार करेंगे, फिर 5 साल और देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि सीबीआई अब तो आ जाओ. तो गाइज प्लीज पुल अप योर सॉक्स. This entirety is a movie script which is botched up big time, and we have got all the possible loopholes. एक और चीज, आज before we move towards the closure, I'd like to clarify, and I'm really sorry that I'm bringing this picture up. I'd like to apologize because I'm displaying this particular picture which I'm about to display on the screen. But there are a couple of misunderstandings that needs to be clarified. ठीक है. अब लोग कहते हैं कि जिस दिन क्रिमेशन था, ठीक है, उस दिन 2 बॉडी थी. क्रिमेशन वाले दिन, जहां पे लोग मुश्किल से 1 फीट की दूरी से खड़े होके हार पहना रहे थे एसएसआर को, वहां पे बोला जाता है कि 2 बॉडीज थी. आई डोंट अग्री. आई डू नॉट. एक ही थी. 2 बॉडीज हमने माउंट ब्लैंक के अंदर रूम में दिखा दी, 2 बॉडीज हमने कूपर में हॉस्पिटल में दिखा दी. देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ द सेकेंड बॉडी. जब वो ऑलरेडी एक बार मॉर्चरी पहुंच गई है, तो सेकेंड बॉडी का साथ में क्रिमेशन करने का रीजन क्या है? सबसे पहला लॉजिक, उन लोग चाहे तो उन लोग इंडिपेंडेंटली कहीं और करेंगे ना. वो रिस्क लेके इतने सारे लोगों के बीच में क्यों 2 बॉडी का क्रिमेशन करेंगे? राइट. लेट मी शेयर द पिक्चर विच वाज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इट वाज फायर्ड अप, बहुत ज़्यादा बातों में थी कि सी देयर आर 2 बॉडीज, और कुछ लोगों ने ड्रॉ भी किया है. तो मैं तुम्हें वो ड्रॉ करी हुई पिक्चर दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है. एंड let's see what exactly that is, and let's understand. Okay, there we go. Okay, yeah, this is the picture. Okay, now I am really very sorry ये ज़्यादा clarified नहीं दिख रही है, but let me go ahead and give you a very simple brief. Okay, this was the body, this is the body. Okay, मैं एक second यार, let me do one thing. Let me stop sharing. Let me try to download this picture, and then let's open it from desktop. Okay, now we go here. I'm sorry for this, and I share it. Okay. Where's the picture? इसलिए नहीं आता मैं इंडिया. हाँ, ये रहा. ओके यार, इसलिए नहीं आता मैं इंडिया पे ऑफेंसिव मत हो जाना, ये मेरा कैच फ्रेज है, ठीक है. मैं कभी कभी ह्यूमर के लिए बोल देता हूँ. सो दिस इज द पिक्चर. लोग कहते हैं दीज आर द फोल्डेड हैंड्स ऑफ एसएसआर, विच इज एग्जैक्टली राइट. ओके, नाउ ये एसएसआर की बॉडी है, इट्स नॉट डिफरेंट. ओके, नाउ लेट मी गो अहेड एंड शो यू समथिंग. ठीक है, कोई डिफरेंट बॉडी, कोई कुछ भी नहीं है. देयर इज नो डिफरेंट बॉडी, देयर इज नो 2 बॉडी. ओके, एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि आई कंप्लीटली अग्री विद द फैक्ट कि कोई भी बॉडी का एक टेक्सचर इतना इतना चौड़ा नहीं हो सकता. आई अग्री विद दैट. एंड आई ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट कि जब यहाँ ऊपर ब्राउन रोप से बांधा गया है बॉडी को, ये ब्राउन कलर की जो रस्सी है इससे बांधा गया है ताकि बॉडी डिसबैलेंस होके, जिसको हिंदी में लोग चबूतरा कहते हैं, उससे नीचे ना गिरे. आई अंडरस्टैंड कि वैसे बांधा गया ब्राउन रोप से. बट इफ यू सी, यहाँ ऊपर एक टाई है विथ अ वाइट कपड़ा, एंड द सेम थिंग यहाँ पे भी है नीचे विथ अ वाइट कपड़ा. ओके, मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई कि जब ऑलरेडी द ब्राउन रोप इज टाइड टू गो अहेड एंड सपोर्ट द बॉडी एंड फॉर इट टू स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर,
तो फिर ये वाइट कपड़े से बॉडी को ऐसे पैक करने की जरूरत क्या है? ओके, नाउ अगर आप देखो जहां जहां पे स्किन वाला पार्ट है, जहां जहां पे हाथ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी, इट बिकेम इजी फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड कि दीज आर हिज हैंड्स। ओके, अब ये जो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो रेड कलर से मार्क्ड है दूसरी बॉडी, इट इज नथिंग बट अ डिफरेंट एंगल, जहां से आपको यहां तक तो इसका लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, बट इसके नीचे अगर आप देखोगे यहां पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक कपड़ा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज स्टफ्ड exactly like the way when Sushant's body was there in the Mount Blanc का रूम, उनकी उसकी लोअर बैक के नीचे कपड़े रखे हुए थे, लोअर बैक के नीचे बहुत सारी चीजें स्टफ्ड थी। I don't know for what reason, but there were things stuffed beneath his lower back. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये सिर्फ एंगल का कमाल है। कल मैंने वीडियो भी चेक करी, इसमें ऊपर से दिखाई बॉडी एंड इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। It's kind of a supporter, or it's kind of an extra cloth which is being stuffed here. It's not two bodies, people. क्योंकि एक बहुत बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास इसका, कि जब दो बॉडीज माउंट ब्लैंक से निकल के ऊपर पहुंच जाती है तो क्रिमेशन में जाने के बाद इन्हें क्रिमेशन के टाइम पे दो बॉडीज डालने की क्यों ही जरूरत होगी? व्हाई वुड दे टेक दैट रिस्क? क्योंकि सामने खड़े होके लोग हार पहना रहे हैं। सुशांत फादर वाज देयर, सुशांत रिलेटिव्स वर देयर, सिर्फ कुछ इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, सुशांत के रिलेटिव्स भी थे, तो उन्होंने नोटिस किया होता, राइट? सो जस्ट टू इंश्योर कि हमारे बीच कोई ये रूमर्स क्रिएट ना करे कि यहाँ पे दो बॉडीज थी और फिर कंफ्यूजन होए, फिर हम वैसे हो जाए कि ये पांच और ये पांच, पांच कहेंगे दो बॉडीज थी, पांच कहेंगे दो बॉडीज नहीं थी। क्यों ना ये 10 मिलके बोले कि कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ तो है वहां पे, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्ड है जिसका रीजन हमें अभी तक पता नहीं है, बट लेट्स फाइंड आउट। तो ये 10 लोगों के एफर्ट्स काम आएंगे कि 5 अलग और 5 अलग? अगर आप डिवाइडेड हो देन यू विल बी स्ट्रॉन्गर, या आप साथ हो और सारी पॉसिबिलिटीज को दिमाग में लेके लॉजिकली अप्रोच करके सोच रहे हो, तब ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। सो प्लीज स्टार्ट putting in logics behind everything that you think, people. It's very important, and we are at a stage wherein we have lost a lot of time. 1.5 years is not a joke. हमने 1.5 साल बर्बाद कर दिए इस केस पे, ये जानते हुए भी डे 1 से कि इट्स अ मर्डर। और अभी भी कुछ नहीं होगा, अभी भी आई विल टेल यू क्या होगा। अभी आज ये सेशन हुआ है, आने वाले टाइम पे हम और भी सेशंस करेंगे इन सब चीजों के ऊपर, बट जैसे ही एनसीबी 1-2 न्यूज लेके आएगी ना, ये सारी जो बातें हैं, दीज विल बी फॉरगॉटन, फिर चालू हो जाएगा। अभी भी चल रहा होगा, ट्विटर पे जाके देखो, नवाब मलिक ने नई धमकी दी, समीर सर का ये हो रहा है, ही विल कम बैक एज अ लेजेंड, ही इज एन अमेजिंग ऑफिसर। हैट्स ऑफ टू मिस्टर समीर वानखेड़े, बट इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन and not just focus on drugs and talk about murder as well. At least let's do the least of the responsibility जो हमारी responsibility है करना, बट हम उस चीज से भाग रहे हैं ये बोल के कि वो काम तो एजेंसी करेगी ना। यहां देखो असली काम हो रहा है, लोगों को परेड हो रहा है, लोगों पे रेड पड़ रही है, ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ड्रग्स 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 ड्रग्स, बस ड्रग्स। और मर्डर की बात हमने छोड़ दी है कि वो तो भाई सीबीआई कर लेगी, हमें क्या करना है। Judy, you are absolutely right, because his legs were broken. We have seen his right leg, right knee was completely, I cannot even recall that image. It was so painful to see. It was disfigured, ankle was twitched, and the entire leg is broken. But नहीं, भारतीय ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है, वो बड़ी न्यूज है। या ड्रग्स में अभी किसी बड़े नेता का नाम आने वाला है, वो बड़ी न्यूज है। लोग उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है।
और लोग इस चीज के लिए गुस्सा नहीं है कि साला सीबीआई इतने टाइम से चुप होके बैठी है, हम सीबीआई पे प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे? डिवाइन जस्टिस एनसीबी दे रही है हमें। तो गाइस, जिसको भी एनसीबी के नारे लगाने प्लीज लगाते रहिए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एनसीबी के लिए नारे लगाओ, वो आपका पर्सनल आउटलुक है। मेरे लिए ड्रग केस इज नॉट एन आउटलुक। आई एम हियर फॉर मर्डर्स। ड्रग केस एनसीबी इज एलिजिबल इनफ टू गो एड एंड टेक केयर ऑफ देम, और वो कर रही है अच्छे से। हम उनको अपनी सॉलिडारिटी और सपोर्ट दिखा सकते हैं, जो हम दिखाते हैं, बट 24 घंटे, पूरे हफ्ते, हर महीने, पिछले 3 महीने से सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही बात है। हम मुझसे हुआ था, हमने कोशिश करी थी, हमने मन्नत में, जब ये आर्यन खान इतना चल रहा था, टू हाईलाइट द मर्डर, वी वेंट टिल मन्नत। हुआ क्या? 2 दिन तक लोगों ने बात करी, तीसरे दिन लोग भूल गए, फिर आ गए जी नवाब मलिक एनसीबी, नवाब मलिक आर्यन खान, नवाब मलिक एनसीबी, नवाब मलिक आर्यन खान। तो अगर नवाब मलिक करते हुए आपका ये एसएसआर केस सॉल्व हो रहा है जी, जयराम जी की नहीं होगा। मर्डर एंगल पे बात करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम पिछले 1.5 साल से जहां हैं, आने वाले 5 साल तक भी यहीं रहेंगे। एंड आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। ये वीडियो है, क्लिप लेके सेव कर लो। डेट्स आगे बढ़ती जाएंगी, हम एजेंसी का वेट करते जाएंगे। उधर एनसीबी हमें न्यूज, क्योंकि एनसीबी तो अपना काम कर ही रही है ना, वो तो ड्रग्स वाला काम कर ही रही है। ड्रग बस्ट तो आए दिन होते रहते हैं। ये तो सिर्फ हाई प्रोफाइल ड्रग बस्ट हो रहे हैं इसलिए न्यूज पे आ रहे हैं। तुम दिल्ली जाके देखो, उड़ीसा जाके देखो, अलग अलग जगह जाके देखो, कसौल जाओ, कितनी ड्रग बस्ट होती है डेली बेसिस पे, थोड़ी ना आती है न्यूज पे। और आती भी है तो हम जैसे लोग, तो हमें बस मुंबई के ड्रग बस्ट पे इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पे स्टार्स का नाम खराब हो रहा है। मानता हूं कि वो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, हम चाहते हैं कि स्टार्स का नाम खराब हो, बट आर वी फॉरगेटिंग व्हाट वी आर ऑल हियर फॉर? So again, would request you, please start raising your voices for murder rather than NCB and Nawab Malik and whatnot. NCB को भी support करो जितना हो सके, जैसे हो सके अपनी personal capacity में करो, but please respect the fact कि we have to talk about murders. हम यहाँ murder के लिए आए थे और हमने इसे एक ड्रग केस बनने दिया है। इसमें किसी मीडिया की गलती नहीं है, किसी एजेंसी की गलती नहीं है, it's our fault. And we have to be mature enough to accept and try to mend our ways now to ensure कि आगे हम अच्छे तरीके से बढ़ पाए। That would be my request to you all. अगर अगर वीडियो में थोड़ा सा सेंस बना, थोड़ा सा समझ आया, प्लीज लाइक कर देना। Leave your comment as a feedback because that matters to me a lot. So please take out a minute of your time and leave a comment after the video that what you feel should be done. And then, do you think, Usha Gary, do you think Bharat agencies and government even care about common man's voice? They do, but only जहाँ पे वोटिंग की बात आती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है ना, तब कॉमन मैन की आवाज सुनती है जनता, गवर्नमेंट, नहीं तो नहीं सुनती। हमसे अच्छे तो वो फार्मर्स हैं यार, अपने हक के लिए लड़के तो चले गए। यहाँ पे किसी एसएसआर वॉरियर को बोलो कि 5 दिन जाके सुशांत सिंह के घर के सामने बैठना है, मैं रेडी हूँ जाने को, कौन ज्वाइन कर रहा है, चलो देखते हैं। 5 बोलेंगे, 1 आएगा। अगर जस्टिस के लिए लड़ना है ना, तो उसके लिए करना पड़ता है, करने से होता है, सब बोलते हैं। सिर्फ बोलने से, ट्विटर पे, ऑनलाइन ऐसे नहीं होता। ट्विटर, सोशल मीडिया वी कैन यूज कि हमारी आवाज एको हो दूर दूर तक। ठीक है, आपने देख लिया ना, जो एनसीबी का मूड है वही किया ना उन्होंने। समीर वानखेड़े का टेन्योर एक्सटेंशन नहीं हुआ, एंड फार्मर्स लॉ इज द बिगेस्ट एग्जांपल। Government had simply kneeled down in front of them. They retracted the bills. That's the power. And that's a conviction.
तो डिसीजन आपका है यार। अ, कल फिर मिलेंगे। कल बॉलीवुड की बैंड बजाई जाएगी। कल हम थोड़ी बॉलीवुड की धुलाई करेंगे कि वो किस तरीके से हमारे रिलीजन्स, हमारी कंट्री के अगेंस्ट दे हैव बीन सोइंग सीड्स. I would be coming up with a couple of movies and songs as well, wherein they have defamed the country, defamed the religion. We'll be having discussions on those and the way their modus operandi works in terms of going ahead and, like brainwashing people. So, see you all tomorrow. Thank you again. Please do subscribe, share, and leave your comment. And please, yaar, आवाज उठाते रहो. Please, it's a request. Thank you so much and have an amazing night. Thank you for being here till 1:30. See you all tomorrow.